Well. That was emotional, and yes, of course, as a Chelsea fan, यार ये तो feel करना ही था. It's basically the last few days of the Roman era, and yes, breaking news. जो भी देख रहा है, in case you don't know, यार, yes, it is now as in 99% official कि yes, Todd Boehly or Consortium they are going to be taking over Chelsea Football Club. It's just a matter of getting approvals government से और प्रीमियर लीग से और वहां उस मॉन्टाज में इसलिए मैं प्ले किया क्योंकि वी हैव सीन चेल्सी ग्रो फ्रॉम व्हाट इट वाज ऑफ कोर्स बहुत हिस्ट्री था लेकिन बिल्डिंग ऑन दैट विद ऑल द ट्रॉफीज इतने सारे मैनेजर्स इतना सारा रिस्क लेना एंड फिर यस ऑफ कोर्स उस मॉन्टाज में ये नहीं था कि यार रोमन एंडेड विद सुपर कप एंड द क्लब वर्ल्ड कप that is basically a fitting tribute, absolutely. And as I say that, welcome to the stream, of course, Uday from Loudmouth Football. Yes, I know it's an odd time always, but ready to come on, and that's what I love about Uday. So Uday, I'll be sharing my thoughts further. Lekin, while I kind of give a shout out to the people in the chat, please share your thoughts as well. Right. I think this is a massive opportunity for Chelsea fans and also the owners, the new owners, and the entire consortium who will be taking over the team. I think first of all, 2 billion is a massive amount, and I think Chelsea fans, so definitely they'll be taking a sigh of relief knowing कि जितना लोन था वो इब्राहिमोविच ही पे ऑफ करेगा एंड बाकी जो सेल्स प्रोसीड्स हैं वो चैरिटी को जाएंगी. तो आई थिंक एवरीथिंग लुक्स सेट एट द मोमेंट, बट चेल्सी फैंस की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इब्राहिमोविच जैसे स्पेंडिंग करता था, आई थिंक दैट इज समथिंग चेल्सी फैंस वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. वो हमें आई थिंक विद टाइम पता लग जाएगा, बट लुकिंग एट द यूएस इक्विटी फर्म which has helped the entrepreneur in purchasing this club, I think it is a massive opportunity for Chelsea fans. बिल्कुल और यार बिग अप यार सब लोग जो भी है स्पोर्ट्स कप आरसीएस फहाद राजू मास्टर ओजी सात्विक श्याम चारिजार्ड लुमान्यू एंड ऑफ कोर्स हम आएंगे बाकी क्लब्स पे और हम गेम वीक 36 के बारे में बात करेंगे कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम वीक होने वाला है एज एन क्रूशियल गेम वीक जो हुआ है मिड वीक में उसके बाद. लेकिन जैसे उदय ने बोला एंड अगेन पीपल एज ऑलवेज डू लाइक द स्ट्रीम डू चेक आउट लाउड माउथ फुटबॉल. Very good channel, trust me on that. And of course, I'm hoping यार आप हमारे दोनों चैनल्स पे सब्सक्राइब दो because you will get content on both the channels. हाँ थोड़ा सा quickly before I go further, I am not feeling well. ये proof है, ये दोनों thermos ready है. So I'm not feeling well. So I have to get support from everyone here. I'm hoping that that can be done. Of course, ये news is kind of mixed. मतलब मेरे लिए सच में बोले तो it's kind of bittersweet. We have been waiting 2 महीने हो गए यार 2 महीने हो गए जब है ना we are been waiting. I know Luton Town गेम था उसके जस्ट बाद हमने रिएक्ट किया था. Kind of we were all in the shock and that is the irony that it is the FA Cup which is pending or we have a Liverpool fan in the panel because वही time पे we are getting this news about Todd Boehly. Or let me actually share it because the club statement in case आप लोगों ने मिस किया है. And again, people, I'm saying like we will be covering a lot of topics here, but ye is something that I really wanted to discuss. And of course, Chelsea fans, how do you feel about it? Because yes, Chelsea Football Club can confirm that terms have been agreed for a new ownership group led by Todd Boehly, Clearly Capital, Mark Walter, and Hans-Jörg Weiss, right, to acquire the club. Of the total investment being made, 2.5 billion will be applied to purchase the shares in the club, and such proceeds will be deposited into a frozen UK bank account with the intention to donate 100%. I mean 100% to charitable causes, as confirmed by Roman Abramovich. UK government approval will be required for the proceeds to be transferred from the frozen UK bank account. And in addition, the proposed new owners will commit 1.75 billion in further investment for the benefit of the club. This includes investments in Stamford Bridge, the academy, the women's team, and Kings Meadow, and continued funding for the Chelsea Foundation. And by the end of May is when things are expected कि वो complete हो जाए क्योंकि हाँ as I said the approvals है वो pending है government से EPL से that is the only thing. वो एक formality है because I'm pretty sure the Chelsea की जो hierarchy they must have done their background check proper. But हाँ Todd Boehly is in town I believe. मतलब again Bhaiya can rice be available at around 60 to 80 million. So रूल की राहत from what I know, yes, of course, now that they are out of Europe, there might be a case कि थोड़ा सा डाउन हो जाए लेकिन the fact is यार राइस के लिए मारा मारी है नहीं उदय तो इतने सारे क्लब जाने वाले हैं प्लस वो इंग्लिश टैक्स तो लगेगा ही तो आई विल बी सरप्राइज्ड कि एनीथिंग साउथ ऑफ 70 मिलियन हो मतलब एक होता है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर 70 मिलियन आर द बिगर ट्रांसफर्स इन इंग्लैंड जो हुए हैं तो 70 मिलियन है नॉर्थ ऑफ दैट तो मैं सोचूंगा 70 मिलियन एक प्राइस टैग रखेंगे
as a minimum. मतलब even that is maybe I'm calling less. What is your call, Uday? आई थिंक रो बिट के भी डेविड मोइस ने बोल ही दिया था कि एटलीस्ट मैं 100 मिलियन से नीचे की बात तो करूंगा नहीं, बिकॉज ही नोज एवरी एजेंट इज वैल्यूएटिंग देयर प्लेयर्स एट अ वेरी पीक रेट. तो आई थिंक ये भी 100 मिलियन तक ही जाएगा. डेक्लन राइस जितना हाइप हुआ है फाइनेंशियली, आई थिंक वैसे तो ही इज जस्ट 60-65 मिलियन बाय, टू बी ऑनेस्ट. दैट्स अ डिसेंट बाय फॉर क्वालिटी ऑफ हिज फॉर प्लेयर ऑफ हिज क्वालिटी. बट हाँ, देखो क्या होता है. बट 100 मिलियन इज समथिंग दैट दे विल आस्क फॉर डेफिनेटली. Yeah, fair enough. And yes, Rishikesh, but the American owner have more attention on sucking money out of the club than footballing aspect. Like again, मैंने ऋषिकेश बहुत वीडियो में पहले भी बताया, लास्ट 2 महीनों में हमने काफी बात की है फ्रॉम वेरियस पैनल, फ्रॉम opposition fans का व्यूज भी हमें मिला है, क्योंकि yes, Liverpool have gone through that, Manchester United have gone through that, Arsenal have gone through that, but Liverpool का मॉडल देखो is very different. Like it's a long term aspect versus a Manchester United and Arsenal. तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन आई गेट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, बिकॉज एक फ्रेंचाइज सिस्टम होता है, वहां पर वो कल्चर है, तो दैट इज समथिंग दैट आप जानोगे, स्पेशली विद टॉड बोली. टॉड बोली इज को-ओनर ऑफ एलए डॉजर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? और बट एट द सेम टाइम दे आर डूइंग वेल. ऐसा नहीं कि उन्होंने एक रातों रात दे हैव गॉट द सक्सेस दैट दे हैव गॉट एज अ फ्रेंचाइज. सो maybe they are in the likes of FSG is what optimistic Chelsea fan would like to say. लेकिन ऋषिकेश, I absolutely hear you. मतलब there is एक स्केप्टिज्म तो आती ही है, रोमन जैसा कोई नहीं, यू वुड से दैट. लेकिन यार चेल्सी एक्सिस्टेड बिफोर, वी हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन कप्स एटलीस्ट बिफोर, और हम होंगे यार, टाइम लगेगा लेकिन हम होंगे सर्टेनली. एंड टॉड बॉली लुक्स लाइक यार इतना बिड हुआ, इतना प्रोसेस हुआ, what controversies happen, उसके बाद if he kind of doesn't give his best shot, as in there'll be an issue. I think I'll probably see him doing well. हाँ, it's not just him, of course, clearly capital and of course others also matter कि कितना पैसा डालते हैं. So let's see as in about that. Yes, of course, let's get the likes up, everyone. And yeah, as in this number that is watching needs to double. Yeah, come on, that's Saturday. Hopefully we'll have many people. Aditya, hi, of course, Uday bhai ka voice, bhai sahab OP. Absolutely, bhai. मतलब his voice is like, I don't know, Uday, गाते वाते आप? नहीं सर, कहाँ गाना गुना मेरे बस की नहीं है. बट अगेन आई एम गिफ्टेड विद दिस वॉइस फ्रॉम बैंगलोर. मैं एक्चुअली भूल गया, गुरुजी को बुलाना चाहिए था आज. गुरुजी और उदय का मतलब दोनों का आवाज, मतलब भाई मतलब अलग ही लेवल. गुरुजी आए मेरे चैनल पे, आई थिंक उन्होंने मेंशन किया था एक पॉडकास्ट में, बट नॉनदलेस बिल्कुल बात करने Arsenal वाला back in Champions League. Let's go, Ujjwal. Okay, let's see. And we'll come to Arsenal versus Leeds as well. Bhai, Amitabh Bachchan, Rahul is a fan, man. Play Rashford as striker and will shine well. We'll come to that as well, of course. Now, Manas is like, भैया क्या इंटेक है इस पे आपका, कि बोली सक्सेस लाएगा या बिजनेस? वेल, एज आई सेड, मतलब फॉर मी रोमन अब्रामोविच जो है, द वे, मतलब उदय समड इट अप रियली वेल. ऐसा बंदा जो 140 मिलियन he had bought, 140 million he had bought Chelsea, right? और वो जा रहा है विदाउट टेकिंग एनीथिंग एंड ही हैज पुट बिलियंस. तो ऐसा बंदा अगर किसी के हाथ में छोड़ रहा है, trust me, वो जो properly परखा हुआ, it's not like easily he would have given away Chelsea. So I believe that let's actually trust Chelsea's decision. Of course government decision भी pending है, तो वो सब चीज देखकर I think it will be okay. Uday, like what is your gut feel about this guy? अंकित, आपने जो चीज बोली उस पर ऐड करना चाहूंगा. इमेजिन 10 times प्राइस ऑफ व्हाट न्यूकासल के लिए जो बिड दिया गया था, उसके 10 times ज्यादा प्राइस है, 2 बिलियन. सो आई मीन द वैल्यू ऑफ द क्लब इज अ लॉट. चेल्सी इज नोन फॉर दैट, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रॉफीज, जो भी इतने ट्रॉफीज अब तुमने लिए हैं इन द पास्ट 2 decades, आई थिंक इट इज मैसिव. एंड ऑब्वियसली 2 बिलियन की बिड लगाना कोई आसान बात नहीं है. तो ऑब्वियसली ही विल डू वंडर्स फॉर द क्लब. अब नाउ the approval has been given for a reason, right? Because he is definitely going to invest a lot in the club. Stadium में women's football team के लिए भी उन्होंने specially बोला था, रोमन अब्रामोविच ने, कि जो ओनर आएंगे वो women's team में करेंगे invest. So obviously I think there is a word of mouth, and this is definitely going to be a big massive opportunity for the club. बिल्कुल. और यार जस्ट टू काइंड ऑफ पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, तो गौरव बोल रहा है Burley won't own majority stake in Chelsea. So yes, clearly capital from reports has the largest investment, लेकिन Burley will be the face of the consortium. ठीक है, तो he is the face and he is probably one of the main decision makers. Definitely majority stake, मतलब again technicalities में घुसना, I don't think it's our job. At the end of the day, it's Burley, as I said, Walter, and of course Hans-Jörg Wyss. That's what I'm assuming. Clearly, capital is obviously the investment firm we're talking about. Yeah. लेकिन
it's just not the couple of million. I believe it's north of 3 billion. Plus there is 1.7 billion का kind of commitment जो उन्होंने किया for future, as I said, so those are things that totally 4.5 billion is what you're talking. So that is huge money, so that's why यार, be it profit, be it whatever, he wants success. ऐसा नहीं डालेगा, अकेला नहीं है, but still फ्रेंकी डियोंग से चेल्सी भाई नहीं, सिंपली पुट नहीं, मैं नहीं देखता हूँ, बारसा अभी नहीं छोड़ेगा, मैं छोड़ने नहीं देंगे यार उसे. Roma did great, bought CEOs, players, managers, won trophies, but he failed to change the DNA of Chelsea, which obviously no carpet free. You, Man U, while I understand totally you are an opposition fan, the montage uske liye hi tha. That is what I said. That the fact that we were a cup team and we went on to bring success into leagues and Champions Leagues, and it's a DNA of winning. If you have watched Chelsea, I have watched Chelsea. I'm talking about week in week out from 2000. आप बोलोगे from 2000 to 2005 versus 2005 to 2022, there's a huge difference in DNA. वो दिख रहा है, मतलब in terms of no matter whatever spell we are under, it's about winning. वो एक DNA he has got, certainly he has got a DNA. यार, even the way of football, like Jose Mourinho was part of it as well, I would say, certainly. Okay, your predictions for Man United and Brighton, we'll come to that. We'll come to all the matches one by one, Kisliya, don't worry. So stay on till the end and get in your predictions as well. सब लोग यार आपके predictions भी बोलिए एक एक करके और लिख लेना कौन सा मैच का prediction कर रहे हैं. Okay, I think there's some problem with seeing old messages. Rahul says पता नहीं बाकी लोग का भी same problem हो रहा है कि I believe नहीं होना चाहिए from what I know. Well, भाई आजकल पता नहीं क्या लाइक्स पे बहुत कंजूसी हो रही है. डजंट टेक अ बक. लेट्स स्मैश दैट लाइक बटन प्लीज. हेलो अंकित भाई, उदय भाई, यस, hello as well to Vansh and big up lad. Manzi talks in the house. Nice to see you, Manzi. I know Man United are not going through a great phase, but we'll probably have chats coming soon for sure. Do you see Man United drop points in the remaining fixtures so West Ham can go for the Europa position, and that would make West Ham versus City very interesting? Oh, that's nice one. Again, Uday, from what I know, West Ham, yeah, they technically have a chance, but what is your call? Like Man United, I know we have asked a lot of people on the panel. Like, आपको क्या लगता है? They'll be happy without any Europe? अभी Man United will definitely not be happy without any action in the European scene. But I think West Ham का भी point gap काफी ज़्यादा है. Even Wolves काफी पीछे रह गए because they've lost a couple of fixtures. Wolves. Share ही कर देते हैं. यहाँ share ही कर देते हैं. Share कर लेते हैं भाई. So let me actually show to people कि क्या हम बात कर रहे हैं उसके बारे में. तो हाँ, मतलब उदय is right. उदय, so 6 points difference, but West Ham have a game in hand, भाई. They have a game in hand, but still 2 game में I think United निकाल लेगी. At least United में अब 2 game पड़ी हैं. United will definitely take it out. Again, they're playing Brighton. At least they can draw that. I think if they're not performing well, like they have not been very consistent, I think इस वाले में draw अगर कर भी लिया, West Ham के chance है वैसे. I mean, it depends on the last game week, to be honest. This is very close. And now that we are seeing the table, everyone, आप क्या बोलते हो यार? पोल लीजिए because पोल बहुत इंटरेस्टिंग है. Chelsea और Arsenal के बीच में, like, who will that be, who will kind of finish third? Like, I still see that it will be one of the two. Just जो Arsenal को एक run मिला है, that's been good. लेकिन again, आज का मैच जो होने वाला है, which will be talking about Liverpool Spurs, might just call it, कि क्या होने वाला है for Spurs. लेकिन it's a really interesting weekend. Chelsea 66, Arsenal 63. Uday, what do you think, yaar? Chelsea, the way the performance हुए, banana skin? Look, let me be honest with you. Today's fixture against Wolves will be very crucial. You have to win this. अगर ये नहीं जीते, Arsenal ओवरलैप कर सकती है. But goal difference के मामले में I think पीछे रह जाएगा Arsenal तब भी. But nonetheless, I think Wolves में Huang Chi Chan और इनके जो attack है, they are very 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 lethal. तो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी डिफेंसिव लाइन बोली, कॉर्नर कोडी और किलमैन वगैरह ये भी बहुत स्टर्डी हैं. तो मुझे अभी बराबर का कंपटीशन लग रहा है because Chelsea have been struggling also as of late and performing consistently. Even though वही प्रॉब्लम है, पोजेशन है, अटैकिंग आउटपुट निकल नहीं रही है. तो Chelsea को ये गेम निकालना पड़ेगा. It is very important. अच्छा, और यार जो भी देख रहा है ना, I think there are about 27 people watching again. आप comments डालिए, अपने questions डालिए. I usually start the questions and I come last तक आएंगे and we'll take most of the questions, right? So do put in your comments, और हम जो भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, any questions that goes out to Uday, that goes out to the chat as well. So feel free to put in your comments. हाँ, मतलब ओपन स्ट्रीम तो नहीं कर पाएंगे. This time ही था, याद है आपको? This time last week when we had that, where we had to basically
as in end the channel. That was ended by for whatever reason, or we have got it, and that's why I thought today this is the best time that we'll stream again on a good note. But Chelsea watch along, by the way, Harsha. So I believe Guruji करने वाले आज. Guruji will do the Chelsea watch along. I will do the Liverpool Spurs watch along. और कल अपना भाई करेगा चिराग करेगा कल for ManCity game. ठीक है? So everyone remember Chelsea watch along on Guruji channel. Adidev Gurugyan. Spurs Liverpool on Almighty Blues FC, or Chirag will be doing the ManCity Newcastle one. Which will be also talking about. आज लिवरपूल जीत जाए, कल सिटी ड्रॉप पॉइंट्स कर दे. Interesting. Just to make it interesting, do you think other big clubs owner had conspiracy against Roman Abramovich using war as should? I don't think so यार. मतलब honestly speaking, मतलब बहुत बाकी टेंशन है बाकी क्लब्स का, और ऐसा नहीं कि चेल्सी वो थ्रेटनिंग कि यार we were walking away with the league. You know what I mean? तो ऐसा नहीं कि रोमन, अगर आप गौर करो ना recent years में after maybe Kepa, maybe Havertz आप बोलोगे, it's not like हाँ Lukaku obviously, but आप देखो we have actually kind of sold players. Hazard has gone, a lot of players have gone. तो ऐसा नहीं कि he's just pumped in. वो जो पहले था ना वो नहीं रहा. इस decade में Roman was not what he was in the initial decade, of course, right? What is Ankit, also, let's be honest, ये business है. मतलब for them it is all business. So other owners will be looking at this perspective कि अगर illegally funds garner हो रहे हैं तो दूसरी टीम बहुत profit करेगी. तो obviously they will be against this, in a way. कि police आते हुए, I think Uday is in danger. I don't know whether it's police ambulance, but whatever. But clearly, capital is gonna own majority of stake. Don't you think it's risky? Yeah, exactly. ये point I would agree. कि when an investment firm is having majority of the investment, it is basically a little bit shady. लेकिन यार again, it's a consortium. They must have done 2 महीने मिले यार इनको. मतलब it's not like overnight आया होगा. They must have spoken multiple times on that. और एक बैकअप प्लान होता है. They have succession plan, whatever it is. These kind of investment firms, and this is at the global level. So I don't think ऐसा होना चाहिए. मतलब right? They'll be looking for returns in the long term, not in the short term. I don't think it will be that quick. So obviously there is a plan in action. Right. अरे बाबा एक्चुअली बाहर है, तो इसलिए बाबा के आज नहीं है. बाबा इज ट्रैवलिंग एज आई स्पीक. सो hopefully we'll have the next one on Baba's channel or my channel, but आज it's on Guruji's channel, and we'll do the Spurs one, as I said, with Liverpool of course. Please do Inter versus Juventus Copa Italia final watch along. हाँ करेंगे यार, but depending on the time of course. हम करते ही, आप देखते हो, lot of watch alongs. Hoping us to beat Spurs tonight and City to drop points against Newcastle in the Oil Clasico. तो चलो लिवरपूल की बात कर ही लेते हैं. Now that we have stepped down, and we come to Chelsea's game, Man City's game, Arsenal's game, of course. Liverpool, of course, after that win against Villarreal, I don't know, relief or it was ecstasy. It was a relief. Yeah. Okay. तो but at the end of the day, मतलब एक था, मतलब पूरा स्क्वाड यूज करना पड़ा था, राइट? तो now that you have this game, Spurs, फर्स्ट लेग जो हुआ था स्पर्स के साथ, मतलब along with maybe the Chelsea game, वो एक टक्कर की होती है ना मैच, that was the kind of game that I saw that okay fine, Spurs really turned up for Conte's as in sake, I would say. लेकिन for you आज मतलब firstly what is your starting level, considering जो हुआ था midweek में, और what will be Liverpool's tactic, just the normal, and what are you expecting from Spurs? मैं आपको बता रहा हूँ बस अपने लाइनअप. मैं एक कमेंट मारना चाहूंगा जिस चीज आपने बात खत्म की है. 2-2 जो हुआ था उसमें स्पर्स ने ज्यादा चांसेस बनाए थे, और हर मैच में वो हमसे ज्यादा चांस बनाते हैं एज ऑफ रीसेंट, इन द रीसेंट पास्ट. लिवरपूल हैज अ नैक ऑफ ऑब्वियसली टेकिंग द रिजल्ट्स आउट, तो लिवरपूल जीत रही है, बट स्पर्स अगेंस्ट लिवरपूल डू शो अप इवन एट एंफील्ड. नॉनदलेस आज की लाइनअप में आई वांट लुइस डियाज तो चालू करेंगे, उसको तो खेलना ही खेलना है, क्योंकि he has been consistent. Diogo Jota in the past 2-3 fixtures has been little redundant. Positioning wise वो इतनी pressing intensity नहीं बनवा पा रहा, तो उसको थोड़ा बाहर रखा था उन्होंने. उसको 45th मिनट में निकाल दिया विलारियल के अगेंस्ट भी. सादियो माने obviously as a striker, Salah on the right. Midfield में Thiago, Fabinho and Keita नहीं, Henderson. We need Henderson because we need a lot of energy on the right. I think Trent, Salah and Henderson need to form triangles to surpass Tottenham's press. Even Tottenham can press pretty high up. In the first 20-25 minutes तो हम reverse fixture में खेले थे,
उन्होंने प्रेस ही किया था, तभी सॉन ने दो गोल मारने की कोशिश की थी, दूसरा गोल आई थिंक ऑफसाइड रूल हो गया था, यहाँ बाहर ने नॉकआउट कर दिया था। करेक्ट। बट नॉनदलेस बैकलाइन में तो आपको पता ही है, मैटिप खेलेगा, कोनाटे को नहीं खिलाएंगे हम, मैटिप एंड वैन डाइक एंड रॉबर्टसन एंड ट्रेंट फॉर श्योर। तो Fair enough. यहाँ पर ला लीगा टॉप 4 इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। ओके यस, मतलब हाँ वही है, एथलेटिको का दिखना पड़ेगा थोड़ा। विल कम टू दैट क्विकली अगर टाइम मिले तो। एब्सोल्युटली कोई कंसोर्टियम सक्सेसफुल हुआ कभी आज तक भाई? एफएसजी इज टेक्निकली कंसोर्टियम ओनली ना? इट इज अ कंसोर्टियम। मार्क आल्सो लिवरपूल फैन इन द हाउस, थैंक यू जॉइन करने के लिए। हु सीजन हैज बीन बेटर, डेविड डेया और एलिसन? यार लुक, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव फेस्ड 4.67 शॉट्स XG, ठीक है, जो चांसेस उनके अगेंस्ट बनाए गए हैं 4.67 है। लिवरपूल के अगेंस्ट 2.1 2.12 बनाए गए हैं। आधे शॉट फेस किए हैं, उसमें से उसने अराउंड 40-50 सेव किए हैं एलिसन ने। डगया ने 110 या 120 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेव्स किए हैं। तो ऑब्वियसली डगया की सेव ज्यादा होंगी न्यूमेरिकली, बट इफ यू वॉच द स्टैटिस्टिक्स, Alisson has saved Liverpool's ass plenty of times. So I think Alisson is obviously, he has made the BR football team as well. Coffee teams, he's made it for the FIFA team of the year as well. So I mean, Alisson is definitely the better keeper. And you need a ball playing keeper. Article, you wouldn't rely on a traditional keeper. De Gea, no disrespect to De Gea, but Alisson is a notch above De Gea. Fair enough. और by the way यार, सोमेंदु, पीटर ड्रूरी इज नॉट पीटर ड्रूरी, दैट वो होता था ना पहले पेन नेम जो फॉर राइटर्स ऑथर्स हु डोंट वांट काइंड ऑफ वांट टू स्टे एनोनिमस। तो बेसिकली इट्स उदय इटसेल्फ। उदय इज द पर्सन हु एक्चुअली डज ऑल द कमेंट्री। लेकिन या थैंक्स यार राहुल ये पुट फॉरवर्ड करने के लिए। लेट्स अग्री टू डिसएग्री देयर उदय। मैं तो बोलूंगा यार डेविड डेया हैज बीन फेनोमेनल। मतलब मैं एक शॉर्ट स्टॉपर में रखता हूं थोड़ा सा, मतलब जस्ट एक है, मतलब आई जस्ट फील दैट यू आर राइट। एक होता है कि हाउ मेनी शॉट्स यू फेस, उस पर भी निर्भर है बहुत। लेकिन एलिसन हैज बीन एक पायनियर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ गोल कीपिंग इन द प्रीमियर लीग एटलीस्ट, राइट, along with एडिसन। सो आई वुड टेक दैट। लेकिन स्टिल यार डेविड डेया, the improvement has been tremendous, man. What he was in the first season versus Raj. Okay, I am very skeptical about this consortium. Ludwig, we don't have a choice. ले लो बस अभी, we have to just take it and then hope for the best. The best part is, you know what I want? Let me tell you again, coming back to that, I want ये consortium ज़्यादा changes नहीं करे. You know, take their time and give time to the people who are in charge. और Chelsea as fans, we should be थोड़ा accepting. We should be accepting यार. I remember 2016 season, a lot of people said we came 10th, ठीक है, after winning the league. For me, I about time and again मैं बोला हूँ, वो एक season experiment जो किया था ना second half में under Hiddink, that was probably one of the best times as a Chelsea fan मेरे लिए, or because I was seeing a lot of experimentation जो नहीं हो रहा था, and that this is probably the time. और let's hope कि Tuchel, who's a tactician, stays, and you know Emma Hayes for the women's team, brilliant man. मतलब let's hope that, and of course Marina Petchek सब लोग रहे, ब्रूस बक चल जाए बस, that is the only thing. लेकिन absolutely other than that, we have to be optimistic. Let's go with that, right? और ये कंसोर्टियम में काफी डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली द कंट्रोलिंग विल बी डन बाय द मैनेजमेंट इक्वली, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंसोर्टियम विल वर्क आउट, इन माय ओपिनियन इट विल डेफिनेटली वर्क आउट। Let's see, man. Difficult time. मतलब I agree what Dodu is trying to say. It's difficult because most of the consortiums haven't worked. लेकिन वही है, it's a Liverpool way, looks like. और Lampard, talk about that Liverpool way. Lampard actually wanted even on the pitch to play the Liverpool way. So maybe you know that is something that हमारे management are thinking from years. You know, Ankit, why is the term boring associated with the Chelsea only? Yeah, boring Chelsea. We've all heard it. Boring Chelsea. I couldn't care less. No, Manu, I couldn't care less. Honestly, but that is the DNA. We're talking about DNA, na? We don't care as long as we win, and that is something that we have built over the time. And again, there are two ways. मैं थोड़ा old school. I feel that the defensive part of the game, maybe in a strange way because of Man City, because of Spain, because of Pep Guardiola, ये थोड़ा लोग are kind of undermining. That is part of tactics. That is part of football. Why is it that someone plays, as in sexy football, that is given all the praises, whereas someone who defends really well is not praised as enough? And why is it that Fabio Cannavaro kind of player doesn't win the Ballon d'Or again? It is food for thought, man. You सोचिए आप, especially आप अगर फुटबॉल खेले हो ना, आप समझोगे being a defender, being a defensive midfielder, it's not a cakewalk. Trust me. Not that striker बनना easy है, लेकिन I'm just saying, definitely I'm pretty sure most of you have. इसलिए मैं बोल रहा हूँ. Cricket watch along in Almighty Sports Plus when कल we are planning, Rahul, कल we are planning definitely cricket show होगा. Let's put it that way. कल
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मेरी तबीयत, क्योंकि लाइक यू सॉ मेरी तबीयत इज नॉट 100%, लेकिन आई विल बी पब्लिशिंग एंड वी हैव टू डू यार, एंड अगेन पीपल ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस डोंट फॉरगेट, एंड एज वेल एज लाउड माउथ फुटबॉल, लाइक में नो कंजूसी, आओ लाइक करो एब्सोल्युटली भाई, नो कंजूसी लाइक पे, और सब्सक्राइब में भी टू बोथ आवर चैनल्स एंड योर कोटवा और एलिसन। माय क्वेश्चन निखिल गॉन वन अबव, फॉर्म वाइज तो यार आई विल गो विद कोटवा ना, मतलब दिस सीजन नहीं। हाँ मतलब कोटवा का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है सीजन, पर मैं एक चीज बोलूंगा, जब से एलिसन ने लिवरपूल के लिए खेलना शुरू किया 4-5 सीजन पहले, कभी हैज ही बीन इन कंटेंशन टू स्टार्ट सेकंड? दैट इज माय क्वेश्चन एंड दैट इज माय आंसर, so I think that answers everyone's और question. कोटवा का रहा है एग्जैक्टली, तो दैट्स अ ग्रेट आंसर, वेरी स्मार्ट आंसर बाय उदय। और हम फाइनल की बात करेंगे यार, चैंपियंस लीग एंड ऑल, वो पेंडिंग रखते हैं, एफए का फाइनल, चैंपियंस लीग फाइनल, we'll have all the Liverpool fans, मतलब I'm trying to get, maybe let's see if Uday is there, Doug is there, Michael is there, of course Menace and the Monk is there, Indie Cop League, सब लोग, we'll try and arrange something, let's see if we're able to, how many are available on the date. Yeah, do you agree that our owners FSG and Glazers are almost same, but the only difference, by the way, our two clubs is Klopp, not a Two bad things. Two things. First, appointment of management is very important. Decision making made with lesser funds to expend is what FSG did. Glazers के पास surplus funds थे, उन्होंने तब भी इतने poor decisions किए, and all in on the basis of commercialization. Second, manager जो आपने पॉइंट मारा वो बिल्कुल ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है मेरे। राइट, चलो फिर वापस गेम पर आते हैं। लिवरपूल इज प्लेइंग स्पर्स, तो अगेन लेट्स सी, यहाँ पर एक मैं देख रहा था, अकॉर्डिंग टू यू गाइस व्हिच वुड बी द बेस्ट बैटल इन टुनाइट्स गेम, फॉर मी इट वुड बी सॉन वर्सेस ट्रेंट। या आई थिंक दैट्स एक्चुअली, मतलब बैटल तो क्या बोलोगे, मतलब आई थिंक मतलब इट विल बी ईदर वे, बैटल विल बी वन, एक डिफेंसिव एलिमेंट दिखने को मिलेगा नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं सॉन वर्सेस ट्रेंट कोई बैटल नहीं है, सॉन निकाल लेगा उसके बॉल। हाँ वही मैं भी वही बोल रहा था, डायरेक्टली बोला नहीं तो देखो, लेकिन हाँ नहीं निकाल लेगा। मतलब बट ट्रूली स्पीकिंग, व्हाट इज द मेन बैटल, मतलब मे बी बैटल ऑफ मिडफील्ड यार, मतलब फॉर मी मिडफील्ड ऑफ स्पर्स hasn't looked too bad. Midfield of Spurs, the problem is Bentancur is still trying to adjust to the Premier League. उसकी जो पार्टनरशिप है हॉयबर्ग के साथ, वो ओवर द सीजंस बनेगी। अभी दिस इज द फर्स्ट सीजन दे बीन प्लेइंग टुगेदर। Nonetheless, he's shown that he's a functional midfielder, very good center midfielder. But जो ability है अभी तक, आई थिंक लिवरपूल की abilities creatively ज्यादा अच्छी है, midfield से ज्यादा बेटर आती है। इनकी टॉटनहम की ability आती है creatively top 3 से। तो I think Liverpool should dominate the midfield, hopefully. But right flank पे यार कुलुसेस्की है, he's a dribbler. He's a good distributor of the ball. Switch off play भी कर देता है induce, तो दिक्कत आएगी लिवरपूल को, आ सकती है आराम से दिक्कत। सादिक भाई यहाँ वही बोल रहे हैं, most consortia anyways American sports owners, we are finding the truth worth holding guys and avoid attacks man from nailing them. Yeah, I think great call that Sadik bhai, absolutely, मतलब he knows his stuff, लेकिन देखते हैं यार, मतलब सादिक भाई, I am still in two minds, it's mixed feelings, like मैं तो यार it's kind of a relief, मतलब थक गए थे यार रोज बात करते करते, थक गए थे, अब बस ये होपफुली यार ये अप्रूवल आ जाए, बस उतना मत करो इस शॉक, बस वो हो जाए, and so that we talk about transfers, और lot of people want transfer talk यार, चेल्सी transfers कोई पॉइंट ही नहीं बात करने का भी, as long as ये नहीं होता था, right? And Potato Boy 251 says, I'm a Spurs fan, but I think we will lose 3-0 because of Emerson. I think, I don't know man, मतलब what about your right back from Wolves जो अपने किया था, लेकिन he's done well, I think recent डॉटी बेचारे इंजरी नर्स कर रहे हैं अपनी, अभी सीजन के लिए आउट है, वो भी शायद आउट है, अपना दूसरा लेफ्ट विंग बैक सर्ज रेगुलो, तो वहां भी रायन सेसन शुरू करेगा। ओके आई थिंक या देन फेयर इनफ, और यस सूरज थैंक यू यार, मुबारक हो आपको भी यार सूरज, चेल्सी फैन इन द हाउस, certainly मतलब it is time to at least move forward. Liverpool fan Sahil says, we have a score to settle in Paris. Ankit, I'm writing it in bold letters, mark my words. Okay, let's see हम बात करेंगे उसके बारे में. Farhan is like, will Boehly go for some fancy signings like Messi or Dybala during the summer transfer window? Messi or Dybala in the same sentence, by the way. Just note that. Or will he back Tuchel and let him call the shots? I hope he backs Tuchel. It's not just him, like I said, it's a consortium. That is the issue. अगर वो बैक करेंगे, मेरे ख्याल से, again, I don't think हम जज करने वाले हैं इस समर में. It will be back to square one आप बोलोगे. Almost when याद है Lampard was under transfer ban and then we got lot of money. उसने किया था 4-5 signings.
and he got the raw deal. You cannot judge when you get so many signings together. So I think for me, हाँ काफी चेंजेस हो सकते हैं. I hope ज्यादा चेंजेस नहीं हो. मतलब lesser the changes is better. मतलब unlike last seasons. ओके यार ये कितने बार और पूछ रहे हैं, मैं इतना लेट हो गया. करंट चेल्सी टीम में लैम्पार्ड की तो साइनिंग्स हैं, टीम ओवर्डे वगैरह. Exactly. It's only Saul on loan and Lukaku. That's the only thing, right? As in most of them are Lampard or obviously Sarri. Those are the signings that we're talking about, right? And Liverpool people, run by football professionals rather than bankers. Well, fair enough. yeah, Even nahi, as a this is not the thing. Even when we were struggling with injuries, we were also complaining a lot कि FSG हमें invest करने नहीं दे रही. और but fact ये है कि क्लॉप ने मैनेज कर लिया क्लब अच्छी तरह, क्लॉप की मैनेजमेंट की वजह से है ज्यादातर. So it is 50-50. Even the board has been backing him a lot. So that is, the onus is on both the management and even on the owner. So मतलब सादिक भाई यार, respect giving it to Allison absolutely, but हाँ यार around 50 people are watching. I hope यार likes तो 150 reach हो गए होंगे अभी तक. We are half an hour into the stream. Let's get the likes up. सब लोग like ठोक दो absolutely, and do check out the channels links below. It's in the description, the first couple of lines. Exactly right. And yes, Newcastle की बात भी करेंगे यार. We'll come to that absolutely. सॉन ट्रेंड से बचेगा भी तो सामने वीवीडी खड़ा है. मैटिफ खड़ा है, मैटिफ वीवीडी रॉबर्टसन की तरफ है. Exactly. और मैच एनफील्ड में अंकित is 3-0 straight with Diaz, Jota and Salah. Well, interesting. और शायद and any other Liverpool fans or neutrals get in your predicted 11s. आप क्या चाहोगे? Especially जो win था against Villarreal, I think a hard fought win. Let's be honest about it. उसके बाद basically what would you like to have? What would you like to see? Considering जो next week होने वाला है, next week is also every week is very important, right? And of course we'll come to our Chelsea game as well, exactly 1 week from now, by the way, right? If I'm not wrong. लेकिन उदय prediction पर आ जाते हैं quickly. Liverpool Spurs difference maker हमने बात कर ली है, starting 11 बात कर ली है, injuries बात कर ली है. Now let's get to predictions. What do you think? यार people, Liverpool fans will hate me for this, but या तो 2-1 लिवरपूल जीत जाएगी मुश्किल से, या 2-2 ड्रॉ होगा यार. स्पर्स है भाई, मजाक नहीं है. मतलब स्पर्स की जो टॉप ट्रियो है ना, दे आर द बेस्ट, द मोस्ट अटैकिंग ट्रियो इन द वर्ल्ड. इवन साला, माने और दियाज के टक्कर के हैं. और टॉप 4 यार उनके लिए बेसिकली इट्स एज बिग एज लिवरपूल द गेम, ऑनेस्टली. मतलब स्पर्स फॉर देम टू रिटेन सॉन, केन, कुलुसेव्स्की, जो भी बोलो, these are names where they will attract clubs, na? So for me, I'm saying that yeah, they really need or Conte for him to even stay at Spurs. I think he probably requires that. So you can say that, but I still feel यार, मतलब लिवरपूल हर मैच में बोलता हूँ नहीं यार, अभी थक जाएगी. ये एक्स्ट्रा गैप ला ही देती है लास्ट हाफ एन आवर में, पता नहीं कहाँ से. लुइस डियाज probably for me he is the difference maker. Which is what was surreal. आजकल ये तो बहुत सरियलिटी है इस चीज में. बट जो लिवरपूल सिटी करती है वो बहुत ही रिलेंटलेस चीज है, और मैं तो शॉक्ड हूँ कि अभी तक एक मैच हम हारे नहीं है. थैंकफुली इतनी एनर्जी है टीम में, तो बहुत बढ़िया चीज है. बट क्रिस्टियन रोमेरो की बात करो तो उनके ही हैज डेफिनेटली punched above his weight. Game on game he has improved, and in the last couple of games he's also helped Spurs. His tackling is amazing. He's a good ball passing. He has a good ability of ball passing as well. So I think Christian Romero is a good addition behind your right wing back. तो बचा सकता है ये भी अगर राइट विंग बैक थोड़ा आगे चला गया, क्योंकि वो थोड़ा हॉट एंड कोल्ड है. वो मुझे याद दिलाता है उसी की सर्ज वॉरियर की. तो या क्रिस्टियन रोमेरो, मतलब वो थोड़ा इंजरी भी थी शायद उसको, ना? इट इज नॉट रॉन्ग. क्रिस्टियन रोमेरो वाज इंजर्ड फॉर सम टाइम. या इमर्सन डज नॉट हैव ब्राजीलियन है, ये ज्यादा हो गया पोटैटो बॉय. लेकिन ऑनेस्टली हम बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर रामिरेस वाज एक्चुअली the Kenyan. He was more like a Kenyan than a Brazilian, जो एकदम भागते रहता था, but he didn't have the pass in him, right? तो होते हैं यार काफी Brazilians है. That is something that you would associate. लेकिन यार one of the most underrated and one of the best center midfield additions, Ramos. Crazy. Yeah, absolutely, I agree. 45 people watching. यार मैं देख रहा हूँ likes, come on, 75 भी नहीं reach. How is it even possible? We are going on for 35 minutes. Let's get the likes up यार. Likes पे कंजूसी मत करिए, मतलब 150 लाइक हो जाने चाहिए within like 5 minutes. Let's get to the 150 mark absolutely. यहाँ पर कुछ नहीं मेसी तो नहीं जाएगा यार. चारिजार्ड says hello. Yes, hello to you as well. Spurs का recent form कैसा है? Well, let's see the form. Like for me, I think they have been up and down like throughout the season. मतलब Spurs का वही issue है ना. They've either been very good or very bad, right? Yep. पिछले 5-6 मैच में वो 5 जीते हैं, 1 हारे हैं वो.
और उससे पहले वो 3 हारे हैं, तो मतलब दैट इज एन ऑन एंड ऑफ. तो अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंसी नहीं है टीम में. But over the past couple of fixtures, they have definitely won those fixtures, and they've conceded 1 goal only, I think, in every fixture. So obviously, Spurs are a good team, यार. And कॉन्ते अगर रहेगा ना, कॉन्ते होपफुली नहीं जाएगा, 1-2 सीजन रहेगा ना भाई, ये चैंपियंस लीग तक भी टक्कर देंगे, जैसे पोचेटिनो के साथ दिया था उन्होंने, फाइनल तक टक्कर देंगे, टक्कर. यू नो वर्स्ट पार्ट क्या है, मतलब जो टीम्स अभी रिसेंटली हारी है ना, वो चेल्सी के साथ खेलने वाली है. लाइक लेस्टर, आई थिंक स्पर्स बीट लेस्टर, ठीक है. Yeah. देन वुल्व्स लॉस्ट देयर रीसेंट गेम, वी आर प्लेइंग वुल्व्स टुनाइट. तो वो एक है, मतलब स्पर्स, हाँ, मतलब दे ड्रू विद ब्रेंटफोर्ड एंड यू नो लॉस्ट टू ब्राइटन. वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, लेकिन अगेन एस्टन विला दे बीट कन्विंसिंगली. मतलब दे हैव यार प्लेयर्स है, प्लेयर्स इफ दे टर्न अप एंड बिग गेम्स दे डू टर्न अप. Doherty is gone, Regulon gone, as Uday is confirmed as well. Absolutely. Okay, lot of questions अभी भी बोली के पास आ रही, लेकिन we have already covered that. How many players will leave Spurs this season? Interesting question यहाँ पर. मतलब depends on top 4 ना उदय. मतलब honestly, मतलब that is probably the make or break for Spurs. आप For बोलोगे? sure. I think निकालेगा नहीं, वो एडिशन डाल देगा. जैसे अब इनके एल्डरवेल्ड छोड़ गया था, वर्तोंगन छोड़ गया था काफी सीजन पहले, तो एडिशन आएंगी, ये निकालेगा नहीं. एरिक डियर इज अ वेरी, फॉर अ सेंटर डिफेंसिव हाफ, बैक थ्री संभालना उसके बस की नहीं है मेरे हिसाब से. ही इज नॉट अ वेरी पावरफुल डिफेंडर. आई थिंक दे नीड अ गुड स्टडी डिफेंडर. अभी डेविनसन सैंचेज भी इंजर्ड है, वो वापस आ जाए शायद, उसी को यूज कर ले. बाकी पता नहीं, कॉन्टे का कुछ भी कर लेता है वो. Brilliant, brilliant. Antonio Conte won 6 to 8 signings in the summer. Yeah, he has been very vocal on basically what he used to and what he wants. So, like मतलब एक link आई थी PSG से बहुत strongly for a couple of weeks. Let's see if something like that happens. अभी भी chance है for me. Okay, if yes, of course, CFC Blues, Boehly was there at Stamford Bridge, if I'm not wrong. If Liverpool wins against Spurs, then Man City will be having a tougher run. Newcastle on paper तो अभी भी, if I'm not wrong, Liverpool ही है, because you have on paper, if you see, हमारे fixtures after Tottenham will be slightly easier. Even we are facing our own Aston Villa. जेरार्ड की टीम है वो, उनका भी हमारी टीम है, वो सिस्टर क्लब है. तो एक तरह से देखा जाए तो जेरार्ड इज ऑन अगेन, ही स्टार्टेड अंडरपरफॉर्मिंग. 7-2 याद दिला दो. अरे भाई वो तो यार चलो 7-2, वो दैट हैपेंड अंडर क्या था वो जो नॉर्वेज का भी मैनेजर सैक हुआ है. या एज इन डीन स्मिथ, राइट. लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी यार मैं बोलता हूँ यार, यू आर राइट. मतलब जेरार्ड हैज बीन अंडरवेलमिंग. मतलब एक न्यू मैनेजर बाउंस था अंकित, ही इज आल्सो स्टार्टेड लूजिंग मैचेस यार, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से हिल गया वो, उसकी टीम हिल गई है. तो लेट्स सी, आई थिंक वील take advantage of that, but City are also facing them, so I hope Gerrard turns up in the last game week and beats City for the love of Liverpool. वो जिता सकता है टाइटल. वो जो Gerrard slip है उसको रिवर्स कर सकता है वो. Fair enough, fair enough. Big up यार Jatin bhai in the house. Insane Football Talks यार, do check out. Again, a lot of people in the community जो grow कर रहे हैं, help them grow certainly, including us, including Uday and Jatin. Conte got sacked in his first job and got replaced by Sarri. That was the most absurd decision, I think. Oosting of Diego Costa and oosting of Conte, the most absurd. Diego Costa को ऐसे निकाल दिया, बजट हो गई उसकी. नहीं तो टॉप गोल स्कोरर था वो प्रीमियर लीग का, सबसे तगड़ा प्रीमियर लीग प्लेयर था वो. मेरे हिसाब से मजा आ गया उसको देख के. Correction वहाँ पर, not in his first job, but I hear exactly what you बोल रहे potato boy. But that is Chelsea यार, ruthlessness तो होता है यार. मतलब थोड़ा सा he lost the dressing room with Willian, things like that. Yeah. The issue was there actually. 106 votes, but only 68 likes. Let's like the stream and help YouTube recommend the video to more people. Like I said, every comment, every like, every subscription, every bell icon, pressing kind of helps for all the channels. Like I always said, Diaz to start today and Jota in cup final. Okay, it is interesting. Jota in cup final clutch, yeah, you can say that maybe. हम बात करेंगे उसके बारे में. 1-1 Chelsea Wolves. Okay, चलो. तो क्विकली हम कर लेते हैं चेल्सी की बात यहाँ पर. अगेन गेटिंग बैक टू ऑन द फील्ड टॉक्स एक्चुअली. Tuchel press conference में he has said basically that unfortunately Jorginho, Kante are not available, and maybe आप बोलोगे यार Callum Hudson-Odoi not being available is not a bad thing at all, like considering जो हुआ है. Ben Chilwell again is not available for the entire season, but Kovacic is back. Yes, Kovacic is back, baby, and that is what I'm hoping that he starts.
whether it's fit to start देखना पड़ेगा, नहीं तो imagine भाई against Wolves where याद है first match 0-0 था, we played with literally 8 fit people, somehow going and we were forced कि यार नहीं चेल्सी यार आप तो खेलोगे, आप तो चैंपियंस ऑफ यूरोप हो, आप जाओ खेलो, लेकिन वो होता है यार Wolves के साथ, we have seen a lot of 0-0s, right? या तो we have seen spectacular goals. So it'll be interesting. That's why I want Kovacic to start. I can't see Saul and Loftus-Cheek starting. That'll be like too risky. Wolves are coming off a loss. Wolves are coming off a loss, a 3-0 loss. Imagine. So मतलब Bruno Lage has impressed me. मैं एक देखा वो structure Bruno Lage के टीम में, तो थोड़ा surprising था वो loss. But Uday, आपके लिए just as a neutral for Wolves, मतलब which has been that player which has been standing out? Any particular player आप बोलोगे, नहीं तो it's just that the team effort. स्टैंड अप प्लेयर मेरे लिए फॉरवर्ड में तो होवांगशान है, उसकी ड्रिबलिंग भाई, उसका पेस, मतलब ही इज एन एक्सप्लोसिव प्लेयर, ही हैज एलिवेटेड द लेवल. अदरवाइज राउल जिमेनेज चलो ही इज अ गोल फिनिशर एंड ऑल दैट, बट फाबियो सिल्वा अगेन एन ओवररेटेड साइनिंग. 45 मिलियन के लिए लिया था उसको, टीनेजर को, कोई परफॉर्मेंस नहीं आती उससे, उसको तब भी स्टार्टिंग 11 खिलाते रहते हैं, कोई है ही नहीं खेलने के लिए आगे. पोडेंस इंजर हो जाता है बार बार, पेड्रो नेटो भी ऑन एंड ऑफ फॉर्म हियर एंड देयर, बट ही इज आल्सो वेरी एक्सप्लोसिव. Pedro Neto का पता नहीं, I think he has not started in the last couple of fixtures, but he was also for one season he was completely out, so that was also a problem. But उनकी backline is very sturdy. I love their backline. I love Roman Saiz. I love Connor Cody, Willy Boly. इनकी backline बहुत लंबी है. Aerially they are very contributive, and defensively they are very sturdy. So वही है, मतलब ऑनेस्टली ना, मतलब वी स्पोक, मतलब हम बात कर रहे थे, मैं, गुरुजी और आई थिंक बाबा लास्ट स्ट्रीम में, वी वर टॉकिंग अबाउट जो बैकलाइन है. फॉर एग्जांपल कॉनर कोडी, मतलब टुकुल को पता था ये सिस्टम खेलने वाला है एटलीस्ट फॉर दिस सीजन, मतलब वी वांटेड, आई एटलीस्ट वांटेड कि वो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करता, लेकिन ही प्लेड इन दिस सिस्टम एंड कॉनर कोडी वुड हैव बीन अ गुड चॉइस. मतलब those kind of signings is something that Chelsea should go for. I agree absolutely. यहाँ पर लिवरपूल का क्वेश्चन आ रहा है यार, मिनामिनो अभी चांस आई थिंक इट्स टू रिस्की, इट्स टू रिस्की. आई डोंट थिंक, या एक्चुअली वेल चेल्सी का मतलब क्या है, मतलब चेल्सी समथिंग दैट मतलब अगेन it's actually has history to it, right? It's back in the day, if you know the pensioners, right? That is the time that they have been calling that. I believe there has to be some geographical kind of a history there. Actually, let me do a video on that. That's a good topic that's arguing the idea. Let me actually do some kind of historical thing, because yes, that pensioners, why we are called pensioners and certain things. So we'll do as in top 5 historical moments of Chelsea. What do you say? As in maybe I'll get one of the Chelsea fans along. Our squad is decent, but our wing backs are pure garbage. I think that Spurs is talking about Potato Boy. Yeah, absolutely. लेकिन again, so Chelsea का game है, Chelsea Wolves, like for me, Chelsea, Lukaku, I know he was questioned, Tuchel again in the press conference, or he said that we have to just have faith in him, we have to give him support. Lukaku is very much here. All the players that are there currently next year भी रहेंगे. मेरे ख्याल से Tuchel का वही मिशन है कि change as less as possible going forward. और we have अभी time, अभी भी probably this is the first week from several weeks जहाँ पर Tuchel को मिला है थोड़ा सा time, with the players. So hopefully for this particular match, maybe he's getting back Lukaku. That might be a strange thing, आप बोलोगे why, but again, has Havertz been the Havertz that we saw last month? No. Possibly not, right? तो वहां पर मैं देखता हूँ Lukaku might just start, and Ziyech hasn't started a match for a while. ठीक है, तो Ziyech might be there, and Werner, I think he's look better than the others. So I won't be surprised with that kind of starting front three. Again, any Chelsea fans in the house, आप बोलिए यार, आपका starting front three क्या होगा? Midfield, though, I think it picks by itself. I think Kovacic, if he's fit, he starts. And the second one, I know I would like to see Saul get some minutes because the last performance wasn't too bad. And Asani, Loftus-Cheek is uprooted trees. But we know that Tuchel believes in Loftus-Cheek. So he would probably go with Loftus-Cheek, considering that Jorginho nahi hai and they need some strength. With Kante not being there, especially. Wing backs, like, James has to start this game. Alonso will start, Pablo Escobar, and I think at the centre half positions, मैं देखता हूँ यार, Chalobah will probably come back. I feel Chalobah should come back. He's probably look better than Aspi, as much as I love Aspi. वो लगा है. Let's see if that's it. But because yeah. Just one point. I strongly feel Ankit कि I would not start Lukaku. I will only start Havertz क्योंकि his form has been better definitely. Lukaku को मैं लगाऊंगा अगर लो ब्लॉक आ जाए ना फटाफट, सेकंड हाफ में पता लो ब्लॉक पे जा रहे हैं वो,
तो लगा दो लुकाकू को. But you know one thing I'd like to mention is if Cavani would have been in Chelsea's team ना अभी, his positional advantage would have been better than Lukaku's, to be honest. और वो गोल मार रहा होता. मतलब Lukaku should have converted many अरे chances. He भाई had many. लेकिन खेलती नहीं है चेल्सी वैसे. प्रॉब्लम वही है ना कि जब लुकाकू पिच पर होता है, स्पेशली रिसेंट गेम्स देखो, वी डोंट क्रॉस द बॉल इनफ, वी डोंट डू दैट इनफ. वी हैव टू, ही इज नॉट द गाय दैट हु नीड्स बॉल एट हिज फीट. मतलब ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय. तो So आप he देखोगे was clinical, but his shots were also saved plenty of times. I feel कि मार लेता ना थोड़ा, तो obviously थोड़ा confidence आया था और खेलने में. कॉन्फिडेंस की बात है यार. मैं सोच रहा हूँ, मतलब आई नो एप्लीकेशन भी होता है, लाइक वर्नर देख लो, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड बी कॉन्फिडेंट, बट Yeah. एप्लीकेशन है. वो डिफरेंस है बिटवीन हिम एंड वर्नर. फॉर मी लुकाकू द ओनली रीजन बीइंग लास्ट 3 गेम्स है. हाँ, टेक्निकली हमने देखा टेबल में, इफ वी काइंड ऑफ ड्रॉप पॉइंट्स आज, वो हो जाएगा नर्वस एनर्जी पूरा. एंड दिस टाइम बोल भी नहीं सकते विल विन द चैंपियंस लीग लाइक लास्ट टाइम. तो दैट इज गॉन. सो ऑब्वियसली दैट इज देयर. लेकिन वही है, लुकाकू कमिंग ऑन एज इम्पैक्ट, सब वो इम्पैक्ट किया नहीं. तो Yeah. दैट्स द, एंड हैवर्ट्स, well, he's been very good, but again, Yeah. I feel that he हफ्ता मिल जाए ना, तो hopefully he's probably tried something, is what I'm guessing. That's the only reason. But I think defense में interesting रहेगा. Like Aspi, he on second thoughts he might play because we don't have Jorginho. तो कैप्टन कौन रहेगा? Thiago Silva maybe, लेकिन अगर Thiago Silva played a lot, तो इंटरेस्टिंग रहेगा. डिफेंस में we can play anyone, like not Christensen, anyone apart from Christensen खेलो. लेकिन I know यार, मेरा यार black mouth, it will be Christensen only playing. But I don't know यार. चेल्सी फैंस, मैं बोलती ही चेल्सी यार, प्रेडिक्ट करो, लोग गायब हो गए यार. चेल्सी फैंस कहाँ गए यार? लाओ यार चेल्सी फैंस को ढूंढ के, प्लीज प्रेडिक्ट करो. कहाँ यार? ऑलमाइटी ब्लूज एफसी है, चेल्सी फैंस गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या है. कोई नहीं. या उदय, एक ये बड़ा अच्छा कमेंट है, ओपिनियन ऑन मार्क कुकरेला. आई थिंक कुकरेला इज अ वेरी गुड फुल बैक फॉर ब्राइटन. मजा आता है उसको देख के. उसकी अटैकिंग आउटपुट बहुत ओवरलैप करता है, अंडरलैप भी कर लेता है, स्पीड भी अच्छी है, बार्सिलोना का प्रोडक्ट है. मजा आता है उसको देखने में. अभी डेवलप करेंगे और तो स्पर्स में बैठेगा वो ठीक. सर्ज रेगुलर जैसे उसका आउटपुट रहेगा, बट एटलीस्ट डिफेंसिवली आल्सो ही शोज अप, व्हिच इज अ गुड थिंग. ही ट्रैक्स बैक. बट नॉनदलेस, अंकित आप बताओ. हाँ यार हार्दिक यार, मैं ना स्ट्रीम करने वाला हूँ अलग से, खाली मैसेजेस के लिए. क्या बोलते हो आप लोग? मैसेजेस करते रहो लाइक आई यूज्ड टू डू. तो जो मैं वीकेंड में अंक करता था ना, which will come again, that will be for that. So that will be addressing all the messages slowly one by one. Like I always say, Hardik and everyone in the house, there is an option of super chat. मतलब it's just not me, आप लोग बाकी चैनल्स में करते हो यार, मतलब not to waste about it. And that is part of the game. वो है, मतलब you have to prioritize, आपको करना पड़ेगा. नहीं तो I will take as much as possible. यहाँ पर we are discussing what 8 games if I'm not wrong, right? 8 games discuss कर रहे, काफी सारे टॉपिक्स है. बर्ली का है, तो हम I will take comments as much as possible. लेकिन always भाई हार्दिक यार, मॉड्स कहाँ हो? आज मॉड नहीं, राहुल एक आज बेसिकली बिजी है लुक्स लाइक, तो लाइक्स बहुत कम हो रहे. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई. एवरीवन, लेट्स गेट द लाइक्स अप. एब्सोल्युटली लाइक का स्ट्रीम, वरना ये अदामा तुमको मारेगा. ज्यादा हो गया है थोड़ा. लेकिन थैंक यू यार पोटैटो बॉय. कम ऑन स्पर्स फैन सपोर्टिंग मी, दैट इज नथिंग लाइक इट, नथिंग कैन बी बेटर. Hardik, Barca fan in the house, he's supporting me always, so that लगता है. वैसे चेल्सी फैंस भी आ जाओ यार, सूरज जैसे और चेल्सी फैंस आ जाओ. सूरज भाई, अंकित भाई बात ये है, स्पर्स ने ट्रॉफी देखी नहीं, आपको देखकर जलते हैं, तो आपको सपोर्ट भी करने की वही. चलो कहीं ना कहीं तो ट्रॉफी दिख रही है. लिटिल बैंटर बट या. नहीं. अच्छा, मैं सिलेक्टेड कमेंट्स ले रहा हूँ which I feel should be highlighted. अगर मैं कुछ मिस करता हूँ then I'll try and come back to them. ठीक है. सूरज, ग्रेट पॉइंट यार. ये मैं पढ़ के, मतलब मैं तो मतलब बाल खींच रहा था. 13 साल लगे बंदे को, 13 साल. 2009, we all remember, it's a disgrace. ठीक है. just 13 years, just खाली 13 साल लगे to actually get to know कि नहीं पेनल्टी होनी चाहिए भाई. एक नहीं, 4 पेनल्टी होनी चाहिए थी, 3 तो मिनिमम. ठीक है. that was what it was. तो अगेन मतलब ही सेड कि यार द फैक्ट दैट चेल्सी वर काइंड ऑफ रिवोल्टिंग सो मच, तो एक ऑपोजिट वाइब आ जाता है ना कि नहीं ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो नहीं पेनल्टी नहीं है. यार आप मैच देख रहे हो कि प्लेयर्स को देख रहे हो? ही इज नॉट फिट टू बी अ रेफरी, ही इज नॉट फिट टू बी अ पेनल्टी बोलने वाला था. न्यूकासल यूनाइटेड इन द हाउस, थैंक यू आने के लिए ऑलवेज. न्यूकासल बहुत प्यारे मुझे.
Madrid is not ruthless. Well, here always talking about Madrid, यार. Come on. बाकी मैचेस भी है, फुटबॉल है. We'll come to that absolutely again. Congrats यार to Madrid. वही बोलूंगा absolutely with Liverpool of course. Bang bang, hello, absolutely 2-1 to Chelsea. Rugwed बोल रहे. Rugwed, yes, Chelsea fan in the house. Thank you, bye. And yes, we have David, another Chelsea fan in the house. Thank you. Let's get more Chelsea fans. Where are they? They're kind of hidden under the rock. I don't know. Tottenham 5 nailed Conte wins the match for football fans. चक दे इंडिया उड़ा दिया भाई तूने दुनिया से बाहर. ये तो उड़ा दिया तूने. Well, we'll come to that. Certainly transfers. Chelsea will win the match. Aditya बोल रहे हैं. Thank you. And Kovacic is main man for Chelsea this season. यार मैं ना जो Kovacic star हूँ तो I love that comment. लेकिन I hope यार Kovacic going on his runs. हाँ, he's coming back from injury. तो मैं expect नहीं करूँगा that he will be basically that person who will be driving it. इसीलिए maybe our friend Mr. Tuchel he plays Ruben Loftus-Cheek. I know second half में एकदम ही नहीं चला था last game में when we lost, right? So, but I feel because Kovacic is back from injury, he might ask Kovacic to be the sitter and Ruben Loftus-Cheek to be the person who carries forward. मतलब देखते हैं, मतलब that might be one of the tactics because Kante is not there, remember. But yes, Real Madrid again. Ruben की progressive carries काफी अच्छी है. हाँ मतलब यार runs ही है, product नहीं है finish. Problem वही हो जाती है उसकी ना. पास दे दे आगे बस, फिर पीछे आ जा. Exactly. Yeah. Okay, Amit Sharma in the house. Amit Sharma asked why City is not winning Champions League, being so strong. Feels sad for City. Sometimes football is so cruel. Yeah, that is football, man. मतलब Uday, again, let's talk about City again. By the way, before that, quickly prediction कर देते. Uday, what are the prediction? Chelsea Wolves. 2-1. Chelsea has to win this. They will win it, यार. जीत जाएंगे. Okay. Let's hope. I feel कि यार against Wolves for some reason we concede first. ठीक है? तो हम concede तो करेंगे, but we'll come back. And hopefully that the entire week that we've had things to build, and like Uday said, we'll come back and we'll score. Like 2-1 even I am going, but the fact that we'll concede first, might be putting thoda butterflies honge. और आज यार atmosphere, check out for the atmosphere at Stamford Bridge because yes, Roman, we kind of realized it finally that it's true, and that's something that maybe the bridge supports. The bridge turn up for the game, absolutely. City against Newcastle. So City, firstly, where would you put the fingers on? I think this is going to look. My Liverpool stride is saying it is going to end in a draw. Because Newcastle is a tough team to beat. I hope they work out well against City. Crystal Palace frustrated Pep. Crystal Palace ने goalless draw करवा दिया था. I hope Newcastle भी यही करे. Yeah, fair enough. Pulisic dad's comments यहाँ पर quickly वापस ये address करते क्योंकि yes, of course Pulisic dad, I think he took down the tweet. If I remember right, and he wasn't happy कि Pulisic इतना खेल नहीं रहे. Tuchel, I love Tuchel, but I just love Tuchel. He doesn't care, carefree. That is Chelsea, ठीक है? And Tuchel has gone on record saying that, boss, मतलब what Pulisic dad thinks or whatever is none of my business, ठीक है? I am here to win football matches, and if you are in Chelsea, अगर आप खेल नहीं रहे हो, you're a top player, you're in Chelsea for that reason, ठीक है? आप खेल नहीं रहे हो. अगर मैं भी होता और कोई भी top player होता, they are never happy. And that's a good thing. And so he has actually put that exactly what I wanted to put it. So for me, that unhappiness dikhna chahiye in the performance. The person should come and do like bang, that kind of performance, which I think he's capable of. It's just that week in week out wala nahi ho raha, right? Ame, we actually have already done the prediction, bhai. You please take a look back after finish the stream. Lekin thanks for coming on. Absolutely. ManCity predicted, okay, by the way, Terry Phelan was there on the same stage as me, and I was there on the same stage as Terry Phelan rather, or he's also an ex-Chelsea player, so hats off here and big up to Terry Phelan, of course, on Sony. So ManCity veteran Terry Phelan predicted that they might end up trophyless this season considering their FA Cup and UCL departures. Exactly. Uday, क्या लग रहा है यार? What is your prediction? एक होता है gut. I know you're a Liverpool fan. आप Liverpool City, obviously were kind of hoping that you kind of meet in the Champions League and show them the real thing. But now that you've got Real Madrid, City are left. I don't know. They are totally left with no confidence. So is it time that Guardiola says kind of be strict and just goes for the league? The thing is that आपने सही बोला है कि confidence तो low है ही यार, dejected है मतलब बिल्कुल ही. Real Madrid से हार गए और उनकी टीम ज़्यादा better थी. अगर देखा जाए तो obviously I think ये impact तो आएगा fixtures में, and even if they are going to collapse against these teams or they might just win.
अब मैं ये नहीं कह रहा हर एक फिक्चर हारेंगे, पर परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक सिटी चाहे प्रेस कर लेना, जो क्रिस्टल पैलेस ने हाल किया था वो एक हाल कोई ना कोई तो करेगी. एस्टन विला, वेस्ट हैम, न्यूकासल, दीज आरंट इजी टीम्स टू बीट. So I think some or the other team will definitely bring their stride down. Yeah. यहाँ पर वापस सूरज बोलते हैं लुकाकू इज लाइक बेसिकली इफ ही स्टेज नेक्स्ट सीजन जो लग रहा है अभी इट्स अबाउट आई डोंट थिंक एनी क्लब विल इवन टेक हिम एक्सेप्ट फॉर मे बी एसी मिलान बिकॉज ऑफ द फंडिंग दे गॉट. तो या वी शुड प्रॉब्ली स्टार्ट हिम इन प्री सीजन नेक्स्ट ईयर. यस देखते हैं. मतलब मैं तो वही बोल रहा हूँ ये जो हफ्ता है ना प्री सीजन टाइप ही है चेल्सी के लिए बिकॉज वी हैड फाइनली दैट 1 वीक. आई नो फर्स्ट कपल ऑफ डेज वुड हैव बीन जस्ट रिकूपरेट बट फाइनली आई थिंक वो साथ में की है एब्सोल्युटली. Will Chelsea go for a forward in the next transfer window? यार don't go big on forward. Haaland की बात हो रही है वापस, by the way. वापस those stories have started. Yeah, it has actually started, but let's see. I doubt it. Like I doubt it because we have probably learnt a lesson. 2-0, okay. यहाँ पर please like the stream. Bang Bang says thank you Bang Bang, absolutely. Regulon coming back to Madrid, backup option. नहीं भाई आएगा क्या बैक? I don't think so. नहीं आएगा मेरे साथ. टॉटनहम भी रहेगा मेरे साथ. साइन कर लेंगे. What I make out, right? He's actually signed a contract if I'm not wrong. Maybe I can be mistaken, but I think he's probably a Tottenham player now, right? Exactly. Who could be a statement signing for Chelsea? So मैं तो मतलब I won't like a statement signing firstly. हाँ, but you can say the players that I want are also kind of statement signings only. I have called Chiesa, maybe Pau Torres, maybe Nkunku, those players with the likes. They are really good. Delict, वो है statement signings. लेकिन I don't know उदय, what do you think यार कैसा player जाना चाहिए चेल्सी को? मेरे हिसाब से तो देखो डिफेंस आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. तो ऑब्वियसली आई थिंक जूल्स कुंडे के साथ आपका था लिंक था, आपका वेस्ली फोफाना के साथ भी था, इवन दो ही इज वेरी इंजरी प्रोन, बट वेस्ली फोफाना एंड सालिबा दे ग्रू टुगेदर. एंड उसका जो लेवल है ना फोफाना का भाई डिफेंडिंग का अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है. लेस्टर के लिए बहुत सही खेलता है वो जो खेलता है. तो आई थिंक वेस्ली फोफाना इज अ गुड ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट, बट पीपल प्रेफर जूल्स कुंडे. आई डोंट नो व्हाई. सेविया का है जो भी है, बट इवन सेविया में ball playing center half है ना, and he has a higher ceiling. राइट. डेगो कार्लोस भी है सेविया में. वो अरे नहीं चीप मिलेगा, वो सस्ते में मिलेगा. अरे भाई जूल्स कुंडे itself is injury error prone. वो डिएगो कार्लोस तो पेनल्टी किंग है यार, पेनल्टीज देता है. बट वो सस्ते में मिलेगा और वो he shows up when he shows up. सस्ते he is a poor man's Kurt Zouma. But हाँ, just saying that. Absolutely. यार कम हो गया अभी, लेकिन hopefully we'll have more people. लेकिन हाँ, talking about City. अंकित भाई, लेकिन जो कर्ट ज़ुमा और ये इसकी थियागो सिल्वा की पार्टनरशिप थी ना शुरू में, जो शुरुआत हुई थी दोनों की, काफी अच्छी थी यार. आई डोंट नो एकदम से तोड़ दी गई थी मेरे हिसाब से. जबरदस्ती तोड़ी गई थी वो जब टुकेल लाए. वो बैक थ्री में कर्ट ज़ुमा इज नॉट आइडियल. बैक थ्री में इज नॉट आइडियल. मतलब वो रीडिंग ऑफ द गेम जो है ना, वो he needs to be better. I know pace है, strength है, height है, headers, he's probably one of the best in terms of clearances, in terms of tackles. लेकिन नहीं. Aryan in the house, thank you यार join करने के लिए. As Tammy is having a phenomenal season, Roma. Should Chelsea consider trigger to buyout clause next year for ये हर एक स्ट्रीम में बात होती नहीं. I agree with Uday exactly because he has found his home. Let him be there. Let him be there. If he want Chelsea यार खरीदेगी वापस. Trust me. ठीक है. But I think he himself do not want right now. That is the point. और उसके गोल्स हैं, काफी टैप एंड गोल्स हैं, and he scored against the weaker opponents. प्रीमियर लीग में वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा फॉर्म. तो अब ये गलतफहमी है आपकी. सॉरी. नहीं एकदम. यहाँ पर well 100 done. Next like target 150. Yes people, let's get to 150 likes. अभी 105 हुए खाली. अरे भाई एस्टन विला का 2 मैचेस ही, 1 अगेंस्ट सिटी एंड 1 अगेंस्ट लिवरपूल. अब मजा आएगा अगर जेरार्ड ने लिवरपूल को ड्रॉप करवा दिए. उदय क्या बोलते हो? कौन सा इन वेरी पुअर फॉर्म. मिंग्स ठीक ठाक कर रहा है, तो आई थिंक लिवरपूल मार लेगी गोल यार. और जेरार्ड बोलेगा मार लो यार, टाइटल ले लो यार प्लीज, एक और ले लो. अरे अगला मैनेजर नहीं हूं. नहीं टेबल में देखो ना, तो इट हैज बीन रियली प्रिकेरियस यार उनका पोजीशन. मतलब इफ नॉट फॉर बेसिकली जो एवर्टन और लीड्स का फॉर्म रहा है ना, मे बी एस्टन विला कुड हैव बीन सक्ड इन. हु नोस. 40 पॉइंट्स हो गए, आई नो, बट आई एम जस्ट सेइंग. जस्ट 40. They're on the big fringes. up DJ Sab, big up, and Chelsea will go all out for Haaland and Chouameni. Yeah, DJ Sab, I know that we have been talking on streams multiple times. Chouameni and Haaland. He's a big fan. I am a big fan of Chouameni especially. I don't see that.
I'll be honest on that. I don't see this happening because of the fact that Germany, we have acted late. Simply put, entire world wants Germany right now. If I was Germany, why would I go to Chelsea? He has seen the example of Camavinga getting a lot of minutes in Madrid. So why won't he go there? Why won't he go to Liverpool, where Liverpool are giving a lot of chances as into Keita this season, right? So there is a chance that Germany gets a lot of minutes in other clubs as well. So that's the only reason. Again, if Petr Cech can work it out because of his French connections, maybe वही बोल सकते हैं. For me, that is the only. And Haaland, I don't know, man. I am still in in a dilemma. Lukaku, just keep him, man, for the time being. If you get Haaland also, then what? Where are we heading towards? Really, I don't know about that. So yeah, yes, Hala Madrid, absolutely. Okay, the cricket match started. Absolutely, cricket match शुरू हो गया. Let's see, interesting match by the way. लेकिन क्या लगता है यार सिटी के लिए, would they be resting? De Bruyne has not been fit 100%. I know Kyle Walker also got injured again. Yeah. तो what do you see City? Again, City fans in the house यार, put in your starting 11 against Newcastle. That'll be interesting. But हाँ, do let me know यार उदय, आपका क्या लगता है? मुझे लग रहा है डे ब्रूनो को ऑब्वियसली रेस्ट करना चाहिए बिकॉज ही इज बीन वेरी, उसको दिक्कत आ रही है थोड़ी. वॉकर ऑब्वियसली ही विल बी रेस्टेड इन दिस मैच. आई थिंक जिनचेंको डेफिनेटली विल प्ले. कैंसेलो खेलेगा, रूबन डियास, लेपोर्ट खेलेंगे, तो खेलेंगे. आगे ऑब्वियसली बाकी लाइनअप सेम ही रहेगा मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली. ऑब्वियसली जैक ग्रिलिश को मे बी यहाँ पे इंड्यूस करने की कोशिश करें क्योंकि जैक ग्रिलिश लव्स प्लेइंग इन दैट फ्री रोल. बट अगेन लाइक वी स्पोक अबाउट हिम कि उसको फ्रीडम मिलती नहीं है ओवरलैप करने के लिए. तो क्योंकि पेप ने उसको समझाया हुआ है ये तेरा एक टैंजेंट है, ये चैनल है, इसी में तुझे डिलीवरी देनी है. तो ऑब्वियसली ही स्ट्रगल्स इन प्लेइंग नेचुरली. बट आई थिंक जैक ग्रिलिश को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट. एटलीस्ट फुल टाइम नहीं, एटलीस्ट 50-55 मिनट्स के लिए मिलनी चाहिए. यहाँ पर यार कुलिबाली तो चेल्सी बहुत साल पहले हुआ था. नापोली के साथ नहीं करना भाई, नापोली के साथ नहीं करना बिजनेस कभी भी. दे आर अ टॉटनम का बाप. ठीक है, सिंपली पुट. बट ही इज बीइंग हेवीली लिंक्ड विद यू गाइस. I know, देखते हैं यार, we are always that, we wanted a lot of players in the prime. I remember Falcao यार, back in the day. Falcao what he did to us, और इतने सारे seasons के लिए he was linked. और जब आया तो क्या ही आया Falcao. The finished player that he was. Koulibaly is not that. I'm not saying that. लेकिन एक timing होती है. Let's see. Again, I won't mind him. He can play left center back also. It's a good call. लेकिन Napoli, man, difficult to do business with them. Difficult. Under Sarri things are different. He got, I know, Jorginho. I think if I'm not wrong, Higuain भी वहीं से आए थे. तब on loan आए थे. Higuain वहाँ से आया था, नेपोली से. But वो Sarri effect था ना. Sarri was there, so I think that was the reason. नहीं तो Napoli. Higuain नेपोली से यूवेंटस गया था, फिर यूवेंटस से आया था, I think. Dilik का captain यार. Yeah, I know that Farhad Ali. That I'm just calling in terms of fitment. Me and my wishful thinking. Okay, why Christian Romero is underrated? In my opinion, he's the best Premier League centre back. Really, the rest of the universe nowhere close to the best, but he is very good. He's absolutely good. ऐसा नहीं बोलूँगा खराब है. Run of form नहीं मिला है, run of games नहीं मिला है as much as he would like because of injuries, because of बोलोगे यार उनको इतना ऐसा partnership भी नहीं है. They need to strike a partnership in Spurs, but I don't know, man. Christian Romero is the future of Spurs centre back, you would say. Obviously he is. He's a great addition in that squad. और वो गेम ऑन गेम अच्छा इंप्रूव कर रहा है. बट बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो बाकी डिफेंडर से खेलने को देखने को मिलती है वो क्रिस्टियन रोमेरो इतनी नहीं. His output is not that much. So obviously with seasons maybe he might improve. But at the moment he's definitely not the best defender. अच्छा, तो आप लोग अभी सुन रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, सुन रहा है, सब सुन रहा है. तो ये टेस्टिंग है. तो आप देखिए भैया, कल जो लोग थे लाइट गई थी तो अभी वर्क कर रहा है लिटरली. तो मैं अंडरटेकर तो नहीं हुआ, नॉट एज बैड, राइट? जस्ट टेक अ फ्यू कमेंट्स उदय. आई विल जस्ट बी बैक इन अ सेकंड, ठीक है? एंड एवरीवन डू लाइक द स्ट्रीम एंड डू चेक आउट बोथ द चैनल्स. जस्ट 1 second, आई विल बी बैक. या For sure. Now Rudiger can help Madrid to win UCL this year in a FA Cup game by taking red card. Lol. Funny comment. सोच रहा हूँ मैगवायर को इंडिया के ISL में खेल के at least he can improve his game. I'm telling you, Robin Gosens ले लो from Atlanta. World class है बंदा पूरा. You can say left flank version of Philip Lahm. क्या लगता है आपको रॉबिन गोसेंस के बारे में? अरे वो इंटर गया भाई. रॉबिन गोसेंस इज इन इंटर. That's already done. It's already done. We missed the bus ना. हमने किया था ट्रांसफर टॉक जनवरी में,
So he's already done. I think it was 25 million if I remember right. Yep. It is a bargain. आज के दिन में it's a bargain absolutely. This one Aryan का interesting लगा. Ankit भैया, this season the relegation battle in Premier League is as excited as the title battle. What do you think? Who will get relegated from Premier League this season? Okay, before we get into the relegation battle and we'll get into that, Aryan, thank you वो comment के लिए. What do you think, Uday? City versus Newcastle. Newcastle में any shout outs, like their season also has been great. मतलब जहाँ से maybe they were 20th at the point and they are what 10th now. Yeah, they were on 9th, I think. Now they're on 10th. Yeah. Abhi 10th, right? On 43 points, and they were actually 20th. So, Alan Saint-Maximin, right? Him actually saying that, okay, I am not Ballon d'Or level yet, लेकिन in terms of skills, मैं हूँ in terms of skills. Where are you on that? उसको ना वो खिला दो, क्या बोलते हैं, FIFA स्ट्रीट कौन सी होती है वो, 5 versus 5. I think in that football phase he'll be a master. But at the moment, everyone is giving him the flag because he's too selfish in terms of dribbling करता रहेगा, skills दिखा देगा, but ball progression में help नहीं करता वो बिल्कुल, like he spoke about Ruben Loftus-Cheek. So I think over there, Bruno Guimaraes has done a massive job. वो डिफेंडिंग भी अच्छी करता है, वो भागता भी बहुत है, तो उसका एक वर्कहॉर्स वाला जो एबिलिटी है 42 मिलियन में बिल्कुल परफेक्ट आई है. प्लस जो बाकी जो साइनिंग्स हैं इनकी, Chris Wood is not contributing in terms of the goal scoring, but at least he's creating that front line of press. जब उसको खिलाते हैं तो मतलब वो क्रिएट करता है. उसके सिवाय वो है जो आपको जोएल लिंटन भाई, मिडफील्ड में न्यू अवतार आया उसका, मिडफील्ड में मास्टर डिफेंड करता है. I went on record saying that I don't mind him. I don't mind him. It will be like the Good Johnson who became a attacking midfielder after being a forward. So it will be that kind of phase. But yeah, please continue. हाँ, उसका जो फॉर्म है अभी, उसको फॉरवर्ड भी खिलाया था उसने, फॉरवर्ड नॉर्वेज के अगेंस्ट 2 गोल मार दिए थे फ्रंट लाइन में फिर से, बट उसको मिडफील्ड में खिलाओ, न्यूकासल गोल कम कंसीड करती है तो उसको पीछे ही खिलाओ. प्लस अल्मिरोन अगेन, उसका थोड़ा इम्पैक्ट कम हो गया, बट ठीक है, अल्मिरोन इज अ प्लेयर हु कैन कम इनटू द सीन, ही कैन हिट द ग्राउंड रनिंग एनी टाइम, तो अमेजिंग, ही इज आल्सो अमेजिंग. शेल्बी समवन जिसको मैं कहूंगा मिस्टर डिपेंडेबल, विद स्किल ही कैन नॉट गिव द लेग्स, बट एटलीस्ट वो ये करता है कि वो सेंटर में खड़ा होकर ना डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉल, और उसकी आपको पता है शॉटिंग एबिलिटी, फ्री किक्स वो लेता है, सेट पीसेस वो लेता है, तो उसने उसका काम चल जाता है. बाकी डिफेंसिव में उनके डिफेंडिंग है, जो लासेल्स वगैरह जितने भी हैं डिफेंडर्स काफी ठीक है, स्टर्डी है. मैट टारगेट आया भाई एस्टन विला से, काफी अच्छा कर रहा है लेफ्ट फ्लैंक पे, एटलीस्ट वो अटैकिंग आउटपुट दे रहा है उनको. राइट फ्लैंक में जो उनका भूल गया को राइट बैक का नाम, ट्रिपियर गेटिंग इंजर्ड, इमेजिन न्यूकासल उसके बावजूद की है, मतलब that is the good part about them. And if I'm not wrong, उनका सेंटर हाफ भी इंजर्ड था, राइट, as a new signing. So मतलब there is a thing यार, देना पड़ेगा यार. मैं तो एडी हाउ को बोला था नहीं चलेगा, लेकिन I was proven wrong. लेकिन यार यहाँ पर अंकित भाई, how can Rudiger help Madrid to win UEFA Champions League this year in FA Cup game by taking red card? भाई come on. निखिल फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई जा रहा है, ठीक है, उसके बाद आप ये भी चाह रहे हो, ये थोड़ा चीटिंग नहीं हो गया? चीटिंग है यार निखिल. ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा. सोच रहा हूँ मैगवायर को इंडिया ले आओ, ISL में खेल के एटलीस्ट ही कैन इंप्रूव हिज गेम. बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री लगा, नॉट बैड. राहुल बोल रहा अंकित भाई बिहाइंड इन क्वेश्चन. यार अगेन मतलब आई नो फॉर पीपल हु आर चैटिंग, फॉर देम आई एम बिहाइंड. ये कोई रेस नहीं है, लेट मी टेल यू, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट. The fact being that it is not a Q&A session, it is basically a preview show जहाँ पर हम बोली की बात कर रहे हैं, where you guys have your questions of course. But लेकिन हाँ, अगर आपको questions prioritize करना है, like Rahul always says as well, there is an option of super chat and I will make sure that I will take that question. लेकिन हाँ, otherwise also मैं try करता हूँ हर एक question लेने का, लेकिन it's humanly not possible to take everything, right? I hope you all understand. जब आप बात कर रहे हो, especially जब 2 ही लोग हैं, 3-4 लोग होते हैं तो वो लोग आपस में बात करते हैं, so it is humanly not possible, but I'll try to take whichever मुझे लगा ज़्यादा relevant है, I'll try and highlight that. I hope that's fair, right? लेकिन हाँ, and of course today as well, even the guest can take address questions absolutely when they're able to, and we'll do as well. मैं कुछ star भी किया हुआ है, I'll come back to them. Okay, यहाँ पर quickly और comment ले लेते हैं, now that we're talking about questions. Zwo Genius in the house. Hello Matt, how are you? I hope you're well. And yes, of course, we had spoken about Chelsea. Do give in your thoughts. It was an emotional moment for me, to be very honest about it, because yes, it's a bittersweet feeling. We have a lot of kind of relief, but at the same time, things are changing, and whether it's changing for the good, that only time will tell. But of course, Zoe, the channel that he has, big shout out to them. Sadi Romero is a decent starter, but nowhere near the best. Exactly.
like how we guys put it, right? I think that's what I would say. Okay. Sadiq Bhai is definitely seen being a Brazilian fan, and I'm pretty sure I have seen lots of him, both at, in fact, in all the three, AC Milan, Inter Milan, or Chelsea, Real Madrid. I have seen him. R9 was a different element. I don't know, Uday, if you got a chance to see R9 live. No, not live, but I've seen him on TV, obviously, plenty of times. So, like 98 World Cup and 2002 World Cup, 98 World Cup, apart from the final, he stood out for me. Zidane, I know, was brilliant as well, लेकिन for me, he stood out. 2002 World Cup, he owned it. ठीक है, simply put. तो आप World Cup own कर रहे हो, and I don't say that normally. तो ये अलग ही element है. The fact that he's not celebrated as much by आज की generation kind of tells you that no, okay, there is something to be, watched back, because he is someone that is celebrated by all Brazilian fans and of course world fans altogether, right? So he has to be there. 2002 में वर्ल्ड कप हमारा आया था दूरदर्शन पे, जो जितने इंडियन व्यूअर्स हैं दूरदर्शन में आया था वर्ल्ड कप, तो ऑब्वियसली उसको देखा था. बहुत ही गंदा सिग्नल आ रहा था, बट मुझे याद है मैं उसको देखा था, मजा आया था उनको देख के, रिवाल्डो, रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो सब. यस बिल्कुल. हाँ यार, मैं राहुल लाते यार, मतलब विल गेट सादिक भाई ऑफ कोर्स, लाइक यू ऑल नो, मतलब हर एक स्ट्रीम में वही चीज बोलता हूँ. If every stream I get the same people, even you guys get bored, so I kind of rotate the stream, rotate the panel, rotate the topics, plus of course we talk about current affairs. सादिक भाई के साथ बात करनी है. एक्चुअली मुझे प्लान ही कर रहा था to contact सादिक भाई and we'll do a Man United Barca kind of a stream. तो lot of people जो पूछ रहे थे doing a lot of Q&As on Man United and Barca, तो उसके लिए सादिक भाई definitely will be much, and of course he's welcome anytime यार. सादिक भाई अगर आना चाहो तो definitely message me, more than welcome यार, always good to hear you. Yuri, we going out to put in the bid for Torino. Yes, Bremer, very good point. Bremer has been highly linked. I think it's Guardiola जो था left center back, और अभी Bremer is for Torino. He's what, 25-year-old. He is a Brazilian. Talking about Brazilians, are right, but yeah, nowhere close. He's decent. Maybe Chelsea fans will think that Italian league से आ रहा है, someone who is basically well built, who has pace. Is it a Rudiger part 2? Too good to be true. It's too good to be true. Torino are lying 10th in Serie A. मैं देखा हूँ Torino के matches. Yes, Turin has not been easy, and he is one of the reasons. Of course, but he is nowhere close to a starter for Chelsea Football Club right now, if you really ask me. Okay. Hope I've proven wrong, because I have been calling for them scouting. But any other centre backs which comes to mind? Dude, to be honest, centre backs बहुत है दुनिया में. But when you talk about centre backs, to be honest, मैं बहुत Premier League bias रखता हूँ. मेरे हिसाब से तो Lewis Dunk भी is someone who you should be considering, to be honest. We were strongly linked. Lampard के अंदर Tarkowski, Lewis Dunk, we were very strongly linked. लेकिन पता नहीं हुआ नहीं. Tarkowski छोड़ेगा नहीं Burnley मेरे हिसाब से, but हाँ, Lewis Dunk is someone we should be eyeing for, and even that guy who used to play for AC Milan, I forgot his name. There's a centre half who used to play. Tomori's partner, right? हाँ. He was also linked, and Skriniar also linked at one point of time with Chelsea, but I don't know what happened. Yeah, I doubt कि he will come from AC Milan, because Simon Kjaer को long term injury था ना, तो मुझे लगता नहीं कि मतलब वो अभी जाने देंगे, especially जो अभी investment आया है. So I doubt कि they let him go. But हाँ, Bruno Guimaraes has been a statement signing for Newcastle. What a player, 100%. Yeah. So prediction क्या है? Score. Anyway, people, even you get your score lines. क्या है आपकी prediction? Man City, Newcastle. हमने दो predictions कर लिए. Third prediction. What's your score prediction, Uday? 1-1. I'll go with 1-1 because I need to. अरे भाई, really? yeah. I'm going to watch every second of that game, and I'll ensure कि एक ही goal मार पाए वो, और नहीं भाई. I still feel that Liverpool and Man City will win their games. I really feel that. Again, close रहेगा. Newcastle has been the form team, of this calendar year. So definitely. Why are forwards, excluding Drogba and Costa, and I would say even Crespo? Crespo, I know he had a short stint, but people don't realize how good he was in that season. And Dembaba was not bad, I would say. मैं तो definitely Anelka को definitely add करूँगा उसमें. So 5, Anelka won a golden boot, guys. Have struggled in the Premiership but thrived in other leagues. Tammy did very well in his first season, but he wasn't given enough chance in the second season. Although Tuchel का system fit नहीं हुआ. He wanted someone who could basically come back and play, float around, that kind of a more of a someone who's more involved. ठीक है, Giroud, Tammy और Lukaku तीनों ही वैसे prove नहीं हुए. So it's basically the kind of football that we've been playing more recently.
उसके पहले तो यार गॉड नोज दैट वाज डेफिनेटली कर्स, लेकिन रिसेंटली मेरे ख्याल से इट्स अबाउट द राइट स्ट्राइकर, वो फिट नहीं हो रहा है। As an impact sub, Giroud did a massive job for you guys, man. Goal Of margins course, though. he did a huge job. मतलब he basically exceeded expectations he expected for me. As in he basically overtook the expectations definitely. Barca fans told Endu racist comment because he posted a pic in Madrid shirt, small club mentality. Oh, bhai, that's not good, man. Team can perform well under right management like Klopp. If you see Man U, they have players like Ronaldo, Bruno, and all, but due to lack of management and too much overspend, they failed the season. Yeah, fair enough. I think a lot rides on the management, right? So they like the way that the camaraderie, the kind of environment in the club goes. I think management is probably the key, right? For sure, which is why their club recruitment chief and the chief scout also resigned on their own. They knew they're not competent enough for the club. So obviously, I mean, management is to be has to take the onus of whatever is happening in the club. Yeah, absolutely. Okay, Sai Pritam in the house. Okay, Chelsea fans are slowly coming. I can see a lot of Chelsea fans. मुझे actually बाद में करना चाहिए Chelsea का topic. Anyway, I have spoken about Chelsea, guys, and trust me, the first part you won't want to miss it. Uday is probably proof there. Uday, we shared lots about Chelsea, and there was a lot of nostalgia, and of course the positives, the negatives about Boehly's consortium. हमने बात किया थोड़ा background उनके बारे में, and of course Roman, what he's left, the legacy of Chelsea. हमने सब बात किया है. So go and check it out after the stream. Do watch the stream till the end और like कर देना, सब लोग like कर दो. मैं अभी भी देख रहा हूँ likes कितने हैं भाई. राहुल बहुत मेहनत करते हैं, हार्दिक बहुत सारे मॉड्स है, they are right up there. You guys are supporting, but 125 likes कैसे हो सकते हैं भाई? We have 175 का target, and I'm hoping everyone here is subscribed. It doesn't take a buck. Subscribe to Loudbout Football. Link है in the first 2 lines of the description, आपको मिल जाएगा. सेम थिंग टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. हाँ, हम वहाँ कंटेंट वापस से शुरू कर दिए हैं, जस्ट सो यू नो. ठीक है, तो रोमन बॉट द क्लब द ईयर आई वाज बोर्न. ओके, नाउ मैट यू आर मेकिंग मी फील वेरी ओल्ड, सिंपली पुट. ठीक है, that is not done, buddy. That is not done, but I hear you absolutely. Never saw anyone else. For me, I am very optimistic. Yeah, absolutely, bro. Respect to Roman, and Matt said it absolutely right. This is something that it can be a great example. हाँ, you can in a strange way. I know मैं जो comparison करने वाला हूँ, ये बोल रही है क्या बकवास कर रहा है. Alex Ferguson जो legacy छोड़े ना, that is a legacy of what? If I'm not wrong, what? 25 years? More than that, I know. Correct me, Man United fans. Roman. 25 years easily. ठीक है, I know that was the manager. This is a club owner. लेकिन चेल्सी के लिए I always thought Jose Mourinho will be that, but no, it was Roman. Roman is the father figure. तो वही है. So it will be very difficult to kind of do anywhere close as what Roman did. So even the new owners will understand what Chelsea culture is, what Chelsea DNA is. They will try to bring their own stuff. So थोड़ा बहुत changes होंगे. So Matt, be ready, man. Be ready for some ups and downs. I'll just say that. But we have to back the team and back Tuchel, most importantly. Just hoping that his personal stuff are sorted and he kind of comes back with a bang next season, provided we finish 4th, man. But तो top 4 किसको बोल रहे हो यार आप? What is your top 4 there? Top 4, you're asking a biased Liverpool fan. Liverpool, Manchester City, Chelsea and Arsenal. I hope Arsenal make it because they have the youngest squad. They're nurturing the youngest squad, और I hope वो निकल जाए यार. मतलब काफी अच्छा खेलते हैं वो तो फुटबॉल, और अभी थोड़ा रॉ है. नुनो तावेरेस भी रॉ है बहुत, वो बेचारा पिटता है बहुत यहाँ वहाँ, पर ठीक है. ग्राम्सडेल है कीपर. तो टॉटनहम से तो कम से कम अच्छी फुटबॉल खेलते हैं. एटलीस्ट दे आर नॉट मोर. आई लाइक अटैकिंग फुटबॉल एनी डे. आई डोंट लाइक काउंटर अटैकिंग. आई डोंट लाइक पार्किंग द बस एट ऑल. तो बात यही है. आज वॉच अलोंग होगा राज. यस, लाइक आई सेड अगेन, पीपल हु आर जॉइनिंग लेट, रिमेंबर देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल वॉच अलोंग्स दिस वीकेंड. सबसे पहले तो चेल्सी का गेम है, चेल्सी वर्सेस वुल्व्स. दैट विल बी ऑन गुरुजी's चैनल, आदिदेव गुरु ज्ञान. Then we have Liverpool versus Spurs. That will be on Almighty Blues FC or Almighty Sports Plus. वो मैं figure out करके publish करने वाला हूँ. So do subscribe to both the channels. And the third one, of course, tomorrow is of course ManCity versus Newcastle. वो होने वाला है चिराग के चैनल में. और कल हम क्रिकेट का भी कुछ करेंगे. So do check out that. Certainly, my team is playing. Just so you know, reminder. लेकिन हाँ, R9 with Ronaldinho, भाई, different. That team was something else. That team, that 2000 David Seaman, man, I remember. That was a different element. Yeah, exactly. बहुत ही interesting होने वाले. Ankit भैया, will you do watch along? Same thing I already said.
ओके, बारसा का नहीं, आज बारसा का मुश्किल है, मुश्किल है, बट वील डू प्रॉपर बारसा का कंटेंट, लाइक हम करते हैं। इट्स जस्ट अबाउट बैलेंसिंग। अभी मुझे लग रहा है कॉन्सिक्वेंशियल ज्यादा लिवरपूल स्पर्स है, एंड चेल्सी का भी टॉप 4 में है थोड़ा, तो इन टर्म्स ऑफ आई स्टिल फील यार, ला लीगा थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्विकली यार। आई नो विल कम बैक टू प्रीमियर लीग। व्हाट डू यू थिंक यार, एटलेटिको मैड्रिड, are they good to for top 4? मतलब you feel that they should get it in the last few games? They've had a very erratic season, to be honest, but I feel Atletico is more of a cup team rather than a league team, to be honest. Domestically, I think you need more consistency in the team, which they were not able to show to that level. But again, I think they I mean, are champions deserving. Atletico Madrid have fallen off. Simply put, that's true. But they should be they should be in the top 4, man. I mean, it's Diego Simeone, master of dark arts. Obviously, he has to be in the top 4, I think. But again, performances haven't been that up to the mark. So या आप देखो यार, 61 पॉइंट्स पर है एटलेटिको, रियल बेटिस 58, सेविया 64। तो लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट वन गेम, ठीक है, एक गेम बॉटल की और वहां पर गया। रियल बेटिस decent, I would say, but काफी underrated, and Real Sociedad B, both the teams are काफी underrated, and Villarreal, after what happened, I don't think they have a chance, so they are gone. So Villarreal will be good for 7th, correct, and I think Barca are safe here. They'll be second. I don't think Sevilla will be overtaking them. What do you think? I don't think so either. But nonetheless, I think David Silva has signed a new contract with Sociedad. So I think he helps the team a lot, and he has actually helped them since the time he has arrived. Sociedad की ranking काफी अच्छी रही है league में. So I think the catch is that exactly Real Betis और बारसा खेल रहे हैं ना साथ में, तो maybe I mean for Sociedad and for Atletico Madrid's sake, it will be a draw. That will kind of save their kind of as in season. But Atletico Madrid are playing Real Madrid, and that is the biggest game. Especially Real Madrid जो आई है, that kind of impact, and they've already won the league. Atletico Madrid will not be giving a guard of honor, I heard. yeah, they won't be. So, what do you think? Real Madrid, will they actually change a lot and actually be okay for this game? नहीं यार, Atletico Madrid, how can they be, right? No, they will put their best team, I think. They will go with the best team because it is more of a pride thing rather than it's a derby. It's not a, it's not a normal match. Pre-friendly होता, अगर friendly होता सीजन का, तब भी ये अपना बेस्ट ही खिलाते हैं मेरे हिसाब से. But nonetheless, I hope Atletico जीत जाए, क्योंकि I think उनका कॉन्फिडेंस अगर कम करना है यूसीएल फाइनल के लिए, तो ये उनको हारना ही पड़ेगा मैच. तो I think, but they're still going to rest their first team players 2 weeks before the UCL final. उनकी preparation बहुत hardcore होगी. Fair enough. Yeah, 25 to 150, I believe. Let's get there. यार अंकित भैया, प्लीज रिएक्ट टू एंग्री रैंटमैन वीडियो। कौन सा वीडियो भाई, आप बोल दो, कौन सा वीडियो आप बोलो, हम करेंगे whatever is spoken about. But yeah, obviously we follow him, but again, big up to all the content creators out there. यहाँ पर लुकाकु's future we have already discussed. मोहम्मद, सॉरी फॉर लेट। तन्मय, थैंक यू यार, मैं ढूंढ ही रहा था चेल्सी फैंस मोर, आगे तन्मय भी। वेल यार ये मैं देखा था कमेंट, बेंगलुरु एफसी में आ गया, तो आई वुड टेक हिम एनी डे। This is going to be good. City almost win this year Premier League if they win 5 years 4 Premier League title. Can City sack Pep? नहीं यार, City sacking Pep will be the funniest thing ever in footballing history. They will never sack. That's not going to happen. Whatever it is, right? And by the way, मैं देख रहा हूँ सादिक भाई has shared something. Let me actually check out क्या share किया सादिक भाई, काफी interesting लग रहा है. And meanwhile, Uday, if you would like to take a couple of comments quickly. Sure. Atletico's main problem this season is Luis Suarez's poor form, and also other players have performed average this season. Obviously, I think Luis Suarez, but he's come of his age, right? He had after he left Barcelona, I think the first season he played for Atletico, उस season तो obviously उन्होंने league जीत ली, बस उसके बाद तो उसका form रहा ही नहीं है. He's lost his legs, man, to be honest. But as an impact sub, he can definitely make that start. और अंकित, एक और है comment. Did Rangers came as a surprise from Pandora's box in UEFA Europa League finals? Yeah, Rangers की team, to be honest, काफी they've been punching above their weight since the past 2 years. They weren't even on the scene against Celtic. एक time था कि Celtic was ruling their league also. Rangers came from Gerrard's again. He was the one who actually uplifted them, and they've actually performed massively well. कोई right back के बारे में बात कर रहा था Rangers के. I've seen him a couple of times, and I'm pretty impressed with the way he plays. So I think Rangers final में आना कोई, it is not an understatement. In fact, And yes,
There was also a comment about Tavernier. By the way, यार people हम लोग जो watch along किए थे ना उसमें हम लोग we actually picked as an UEFA 11 of the week. ठीक है, उसमें Tavernier को हम डाले if I remember right. So do check it out. And काफी interesting 11 है. और यहाँ सादिक भाई actually ब्रेमर के बारे में has actually shared the scouting report. And thanks सादिक भाई, big up यार to सादिक भाई. Yes, like again मैंने जैसे बोला he has been there in terms of defense. Yeah, he's very good and elite level of the ball defender, right? Great at interceptions, pressures, and blocks, and needs work on one-on-one defending as well as tackling ability. Brilliant presence in the air defensively. So in the air, brilliant, and off the ball defending, brilliant. Lekin there are areas in possession. Okay player in possession who prefers to pass the ball more than dribble it out. वो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है क्योंकि again I know Tuchel wants the player to kind of as in play a lot more. But yes, passing is above average and aerial, as I said, is excellent, and offensively he's good. So he's an aerial threat to the opposition as well, which is good. And yeah, he's about to enter his prime, as Sadiq Bhai puts it, and one of the better defenders of the season. Tackling is an issue. Aerial ability is brilliant. Passing and ball playing ability, if improved, he could be an elite defender. Exactly. मतलब lots and ifs and buts, लेकिन potential है. So seems like a Rudiger who is not able to dribble because Rudiger, trust me, he thinks that he's a left winger. Lot of time. तो होता है absolutely. So yes, thanks Sadiq bhai again for that. Like I said, we watched him as well in Turin, what he's done. Lekin is he ready for first team as a starter in Chelsea? I have my doubts. So now if he's okay to come at an age of 25 right now to play second fiddle or learn and maybe prove himself, bring him on definitely. FA Cup का अभी नहीं बात करेंगे शायद. We'll come to it next week with the Liverpool fans as well and Chelsea fans more. Thoughts on Gilmore next season, भाई? काफी अच्छा क्रिएटिव स्ट्राइड दिखाया इसने नॉर्विच के साथ. क्या लगता है आपको आएगा? सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में दिखाया, लेकिन इवन अंडर द अंडर डीन स्मिथ उन्होंने स्टार्ट नहीं किया लॉट ऑफ मैचेस. तो फॉर मी थोड़ा है रेड फ्लैग है. मेरे ख्याल से he'll have one more loan which will he'll probably be good at, where he'll be playing more and which suits him. Norwich यार relegation threatening team को आप Gilmore खिला दो पता नहीं. What I like about Billy Gilmore is he's very comfortable with the ball. I love that, the way he plays with the ball. Correct. Reminds me of very swift and flurry players. Yeah, Hinteregger is one guy हम बात किए थे on the stream again. That guy is one for sure who is having it. We had discussed it just yesterday. Gantavya, I'm good yaar, and I know काफी देर से हो रहा है stream and lot of questions we have, but Frankfurt is Europa final. Again we'll come to the UCL and Europa final, but yes, Uday please. Frankfurt का जो wing back है Kosovic है ना उसका? Kostic is he's more like a winger rather. He's not a wing back. He's more like a winger. जो अभी उसके सिस्टम में खेल रहा है विंग बैक. मजा आता है उसको देख के. मतलब उसका लेफ्ट फुट बहुत स्ट्रांग है and he's also pretty gets into the scene like anything. So absolutely 100% I agree. Even now has been good, right? So they are good. City 3-0 win. I don't want this team to go trophyless. Fair enough yaar. FA Cup final will be interesting. Yes, it will be certainly. Now exactly like I said. तो यहाँ पर अदर प्रेडिक्शंस कर लेते क्विकली. अगेन पीपल इन द चैट गेट इन योर प्रेडिक्शंस टू एंड द स्ट्रीम. मैन यूनाइटेड भाई एक स्ट्रीम हुआ इतना लंबा और मैन यूनाइटेड की बातें नहीं किया है. आर्सेनल की बातें भी करेंगे, लेकिन मैन यूनाइटेड कहाँ जा रहा है यार उनका सीजन अभी. दे हैव ब्राइटन अवे आज है. तो क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पर? एनी मेजर चेंजेस? आई नो जेसी लिंगार्ड तो नहीं खेलने वाला प्रोबेबली. बिल्कुल भी नहीं खेलेगा वो. तो मतलब इतनी न्यूज वीक ऑन वीक सिर्फ पेसिमिस्टिक न्यूज मिलती है हमें यूनाइटेड के बारे में. अगेन आई थिंक एटमॉस्फेयर हम सबको पता है कैसा है. टेन हाग की बारी है भाई, आए थोड़ा मैनेज करे और चेंज करे एटमॉस्फेयर. ड्रेसिंग रूम ही हैज टू ओन इट. इट डजंट मैटर इफ दे विन दीस गेम्स, इट डजंट मैटर इफ दे लूज इट. It all depends on how they restart their season from the friendlies. I think that is what is important for United at the moment. Yeah, and I think Brighton have coming off a good run of form, so I won't be surprised if Man United, take it seriously for once. मुझे नहीं पता कैसे परफॉर्म करेंगे अंकित, to be honest. लास्ट मैच जीते नहीं तो उससे पहले तो भाई इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिया हर एक गेम में. लेकिन पिछले मैच में do you think that performance came because of it being the last match बहुत प्लेयर्स के लिए Man United शर्ट में possibly? माटा की जो मूवमेंट थी, ऑफ द बॉल मूवमेंट वाज वेरी सरप्राइजिंगली गुड टू बी ऑनेस्ट. तो मतलब हाँ मतलब कह सकते हो यार, लेकिन मैंने पूरा मैच देखा था. अच्छा खेली यूनाइटेड सिर्फ लास्ट मैच में,
But Yeah. it was very weird, like coming from where did this come from? I mean, every game you've actually been very symbolic, and एकदम से आपने अपने पंख उड़ा दिए, मतलब अजीब सा ही लग रहा था माहौल ना, कि समझ नहीं आई थी ये परफॉर्मेंस आई कहाँ से अगर आई है तो। एनीवेज आई डोंट थिंक, आई एम वेरी स्केप्टिकल व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड दिस सीजन, टू बी ऑनेस्ट। तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ड्रॉ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रोनाल्डो गोल मारेगा, याद रखना, और डे गया सेव करेगा, ये याद रखना। Easier said than done. लेकिन that happens more often ना, मतलब यार सादिक भाई, honestly मैं बोलूँ तो यार Thiago Silva is towards the end, Aspilicueta is towards the end. So I wouldn't mind a player who's already in his prime. You know what I mean? So a player who's, again, मतलब I am not one of those who reads too much into age. I don't care whether we get money or not. मतलब I am a spoiled brat. Put it that way. For me, the player has to be good for the next maybe 3-4 years, or as long as the person is fit. I think Thiago Silva has proven that. Even at 33, you can be among the best in the world. हो सकते हैं यार. You could have actually bought Nat Phillips or Reece Williams also from us. I know यार, वो legends आपके लिए, भाई मुझे पता है. हमारी डिफेंस थी यार, वो वैन डाइक और उसके बगैर. Again, nothing against Liverpool भाई, ये क्या है? चैंपियंस लीग फाइनल में रहे, बट शाउट आउट टू नैट फिलिप्स एंड रीस विलियम्स भाई. ठीक है यार, पता है इतना ज्यादा नहीं हो जाता है, मतलब I don't know what it is. But they punched above their weight, so obviously I think you should consider them. Kostic, yeah, he deserves better. Let's see, man. Frankfurt are doing great. Kostic, if he wins the European Cup, why not? Let's see. Boehly coming to watch the match today, so we are losing. यार नहीं यार, मेरे ख्याल से players वो uncertainty नहीं रहेगी. As much so for me, they will give it a fight. लेकिन as I said, मतलब I won't be surprised if we get a draw against Wolves. Lose तो नहीं होगा बारो. Like come on, we have to get at least a point, if not 3 points. The fact is, I think Arsenal, they are playing, I think if I'm not wrong, Spurs. तो अभी नॉर्थ लंदन डर्बी बाकी है, ठीक है, तो वहां पर एक definitely drop करेगा points, and that is the only hope that we have. Coming to Arsenal, and before that, so Man United, for you they'll win. What's your prediction? And people in the chat, yeah, score predictions. Come on, Man United away to Brighton. I'll go for a draw. दोनों ही बड़ी unpredictable होती हैं टीम्स. ब्राइटन परफॉर्मेंस अच्छा देती है बट रिजल्ट नहीं निकाल पाती. Okay, चलो मैं जा रहा हूँ. यूनाइटेड अभी फाइनली दिखाएगी यार what they are made of, and they'll probably बेल देगी ब्राइटन. मेरे ख्याल से होगा 3-1 होगा अभी मैन यूनाइटेड. 3-1 कर दो. वो होता है ना, प्रेशर कम होता है तो you tend to perform. One of those things which is happening for United from last game, I feel. लेकिन Arsenal are playing Leeds. अरे Leeds are, I don't think they're technically still safe, are they? No, they're not technically safe. Leeds are struggling this season, man. Even the last couple of games, सारी performances देखी मैंने, कुछ मजा नहीं आता उनको देख के. बैमफोर्ड के बगैर लीड इतनी बदल गई है ना, बैमफोर्ड के बगैर इतनी ज्यादा बदल गई है. रॉड्रिगो कुछ कर नहीं आता आगे, डैन जेम्स को भगा लो, बट इट्स ऑल पेस नो प्रोडक्ट. तो वही प्रॉब्लम है लीड्स के साथ भी, मतलब दे स्ट्रगल अ लॉट. रफीनिया बेचारा अकेला क्या कर लेगा, साइड से हैरिसन क्या कर लेगा अकेला. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. प्लस who got injured, man? He broke his leg, the defender, Cooper, their captain, I think. And talking about breaking leg, I think Livramento भी है, I think if I'm not wrong, long term injury for Southampton. लेकिन Leeds, see the thing is, Leeds are yet to play against Chelsea. Proper rivalry है. अगर नहीं भी रहता ना, that relegation threat नहीं रहता, फिर भी Leeds turn up करती. It is at Ellen Road, if I remember right. ठीक है, तो now that they are playing Arsenal, and it is at Arsenal. Like come on, yaar, Leeds low, yaar. Please take points of Arsenal. That's what I would say. But Arsenal, man, मतलब Arteta extending. What are your thoughts on that? I think Arsenal fans are divided, to be honest. But मैं तो काफी खुश हूँ. अगर मैं Arsenal supporter होता तो मुझे तो मजा आता कि भाई चलो ठीक है, कुछ अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिल रही है. प्लस प्लेयर्स अच्छे काफी खुश हैं, और उसके अंदर ऐसी बात नहीं है. ही इज मेकिंग देम प्ले इन द राइट वे. Lacazette is a little has hit a conundrum, but ठीक है. मार्टिनेली काफी अच्छा खेलने लग गया, ट्रैक बैक करने लग गया भाई आर्टेटा के अंदर, बहुत बड़ी बात है. पर 90 इम्पैक्ट देख लो मार्टिनेली का कितना अच्छा है. डिफेंसिवली ही हेल्प्स एटलीस्ट. नुनो तावेरेस को कवर कर लेता है वो, और क्या चाहिए आर्सेनल प्लेयर्स को. बाकी स्मिथ रो की परफॉर्मेंस बड़ी कम हो गई है एज ऑफ लेट, बट ठीक है. As a team, as a unit, they're performing okay. They're not performing bad. They're performing okay. And next season, with addition of more players, I think Kroenkes are spending more money. They have a lot more money to invest. So obviously, वो और team players लेकर आएंगे. Striker आएंगे यार, strikers आएंगे. I think Lacazette चले जाएगा. तो अच्छा भैया, 40 लोग देख रहे हैं भाई. क्या लगता है आपको एक लाइक बटन दबाने के लिए? यार आप बोल दो यार उदय थोड़ा, मैं इतने बार से बोल रहा हूँ. लोग कर दो यार अंकित भाई, मजा आता है उनसे बात करके मुझे तो डिस्कशन में, और आपको एज स्पेक्टेटर्स मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो स्ट्रीम. इनको
ग्रो करवाते हैं और इंकरेज करते हैं और कंटेंट बनाने के लिए, तो लाइक कर दो। और बहुत ही प्यार मिला यार, मतलब लेट्स गेट द लव कंटिन्यू एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। काफी फीडबैक आते भी कमेंट्स में, काफी फीडबैक आते डीएम में, तो यस डीएम करिए। आप अगर लाइक नहीं कर रहे, देख रहे स्ट्रीम पूरा लेकिन लाइक भी नहीं कर रहे यार, तब तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, मतलब या तो कुछ मिसिंग है या तो आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, सो आई डोंट नो, मतलब लेट्स सी। एंड राहुल है, लॉट ऑफ पीपल, हार्दिक है, राजेश है, I'm missing some names, bang है, बहुत लोग हैं जो bots है, they are also kind of working hard, it's a team effort। और talking about team effort, the panel is there as well, give them support as well, it's a community we are building, we are family everyone, ठीक है। हम बहुत सारा content लाने वाले हैं, we'll be upgrading, I know I spoke about super chats, those are things which will go back to the channel, it's not going to my pocket, ठीक है। So we'll be upgrading and we'll be bringing more content, I want to bring even things like FIFA, things like more quizzes, who am I वापस शुरू करने वाले, तो काफी करने वाले हैं भाई, मतलब it is the business end of the season when we are talking football because of certain reason, ठीक है। और pretty sure आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड नॉट फॉरगेट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। और आई वाज रियली अनवेल, लेकिन यार वही है, मैंने कमेंट किया था उदय भाई को, एंड ऑफ कोर्स फॉर यू ऑल, लाइक हम करते हैं हमेशा प्रीमियरशिप का बात, तो आना ही था यार, ऑफ कोर्स विद ला लीगा आल्सो हैविंग इंपॉर्टेंट मैचेस दिस वीकेंड, राइट। तो बट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट मैचेस दिस वीकेंड, कल रात को हमने वॉच अलोंग किया था इंटर मिलान, व्हाट अ कमबैक, 4-2 विक्ट्री अगेंस्ट एम्पोली, top of the table for the time being, AC Milan भाई, मतलब what is your gut feel यार, is it AC Milan's year or not? Inter Milan are not giving up at all. AC Milan has definitely shown quality this year. They should be winning the league. They deserve it, to be honest. Inter have been there on the surface since the past 3-4 years. Ever since Conte has been there. So obviously, Inter have been definitely punching well above their weight. But AC Milan deserve it this season. They have definitely stepped up massively. और they look well rounded as a team, to be honest, so I'm happy कि हाँ AC Milan वापस आ रही है finally after so long. But exactly, but the point here is like about what matches they have now. They are playing Verona over the weekend. I think it's on Monday if I'm not wrong, right? So देखते हैं time क्या है, Sunday night को तो हरा देना चाहिए, लेकिन वही है, next two matches are not easy compared to Inter, तो मेरे लिए अभी भी है, इट्स लाइक इंटर कल ड्रॉप नहीं की ना पॉइंट, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मुझे, एज सपोर्टर ऑफ एसी मिलान एज वेल। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गया, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एनी न्यू वॉचर्स, बिकॉज़ आई एम सीइंग काफी न्यू पीपल है चैट्स में, तो इन केस यू नॉट सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स, प्लीज डू इट, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, लेकिन इवन टू लाउड मॉड फुटबॉल, एब्सोल्युटली राइट। साला रिजेक्टेड द 400K वीक ऑफर। अभी यार हर एक कमेंट में ना जो आते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स, वो सब मैं थोड़ा सीरियसली लेने लगा हूँ। उस दिन आ रहा था अबाउट एम्बापे में सोचा हर एक स्ट्रीम में आता है, मैं आई टुक इट लाइटली, फिर स्ट्रीम के बाद में देखा यार भाई सच में हो रहा है, तो एम्बापे माइट स्टे एट पीएसजी, ऑल्दो आई डोंट बाय इट स्टिल, लेकिन हाँ लॉट ऑफ रिपोर्टर्स सेड सो। साला आई डोंट नो मैन, मतलब वेयर वुड ही गो, मतलब ऑनेस्टली, मतलब लिवरपूल, ही जस्ट सेड कि यार बैलन डोर के लिए ही हैज आल्सो कमेंटेड ना इनडायरेक्टली, पढ़ा ही होगा आपने, 40 गोल्स मैंने मारा था उस सीजन में, इस सीजन में आई हैव ऑलरेडी वन ट्रॉफी, तो देखते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इज लाइक ओके ही इज पुटिंग हिज नेम देयर विद बेंजेमा, रीसेंसी बायस होता है। जनवरी तक सब लोग बोल रहे थे साला नहीं, एक बार आपको मैं भाई एक बार बोलूंगा, साला चला गया ना कहीं और, भाई वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आएगी जो लिवरपूल में आती है। कैसे, हाउ विल यू फाइंड दैट सेम सिस्टम ऑफ प्लेइंग फुटबॉल व्हिच यू हैव फाउंड इन लिवरपूल? चलो मार लोगे गोल, बट इतने नहीं मार पाओगे इतने लिवरपूल में मारे आपने, और इतनी सबसे, यू आर प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम एट द मोमेंट एंड गोइंग टू रियल मैड्रिड इज नॉट एन ऑप्शन। उसको कहां खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? 31 साल का हो जाएगा। अगर बाय चांस एम्बापे सच में पीएसजी रह जाता है ना, there is a possibility, लेकिन रोड्रिगो द मैडनेस इज डन, आई काइंड ऑफ फील दैट पता नहीं यार, थोड़ा अनफेयर रहेगा, मतलब हजार्ड का टैलेंट देख लो, हजार्ड was a much more talented person than Salah was. Salah turned out to be the hard worker obviously, but हजार्ड का देख लो क्या हाल बन गया, साला का क्या हाल बन सकता है। I'm just worried about that. Coutinho का भी यही हाल हो गया था बार्सिलोना जाके। It's very obvious this can happen. It is more likely to happen. अच्छा, यहाँ पर गौरव एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हुए, टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स, Pau Torres is not ideal player for Chelsea. Chelsea needs someone who is fast as well as good at defending positions. Left centre back and right centre back need pace. अच्छा, so Gaurav, the idea why मैंने सोनी टीवी में बोला था कि I need Pau Torres. I want Chelsea to change the way we play. I think that answers the question. ठीक है, answers the statement, because Chelsea लीग नहीं जीतने वाली ऐसे फुटबॉल के साथ. I'll be very honest. And when I say लीग नहीं जीतने वाली,
we're not talking about one season. I want basically Chelsea to dominate that we used to do in the late 2000s and early 2010s, right? Then Man City that is what we want. For us to get there, Lampard का idea सही था, उसका implementation गलत था, ठीक है, in terms of defense. That is what we want. He wanted the right personnel. वो उसको time ही नहीं मिला, and that is what Tuchel can do it. Yeah, Dortmund मेरे हिसाब से लैम्पार्ड सैकिंग बहुत ही गलत थी. I think I was one of the very few fans who was against it. I wanted him to at least stay for the entire season. Because he got you guys through the UCL group stages. I know you won the Champions League that season. क्या पता Lampard जिता देता है Champions League. You never know. ये देखो फिल जोन्स दे रहे हैं यार अपने को. फिल जोन्स और एरिक भाई. At least भाई Phil Jones is playing better than Maguire, to be honest. जितने मैचेस डाल दिए उसने. या घंटी बजते हुए मेरी, बट नहीं है, कोई है खोल देगा प्रॉब्लम. अरे राजेश आ गए. राजेश, वी आर मिसिंग यू गाइस डेफिनेटली एवरीवन. आई स्वेयर इंटर विल एंजाइटी. दिशांत इज एन इंटर फैन. बाय द वे, ह्यूज शाउट आउट यार. दिशांत एक अपकमिंग म्यूजिशियन भी है, तो प्लीज गिव हिम अ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. ही इज कनेक्टेड टू मी. इफ यू डोंट नो हिज इंस्टा अकाउंट, डू डीएम मी. एनीवन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक और इटालियन फुटबॉल, ही इज अ ग्रेट गाय टू टॉक टू. हम काफी बात करते हैं ऑफलाइन. सो या दिशांत, यार वो सब बड़ा ही कर दिया दिशांत का, लेकिन भाई आई एम नॉट हैप्पी कि इंटर केम बैक. सिंपली पुट, कल रात को यू नो इट दिशांत, एसी मिलान इज व्हाट आई वांट, एंड आई नो सादिक भाई भी बोल रहे हैं इंटर जीतेगी. देखते हैं यार. आई माई सेल्फ आई एम सेइंग कि इंटर विल प्रोबेबली गेट इट अगेन, लेकिन आई एम होपिंग आई एम रॉन्ग. साला विल गो टू बार्सा और पीएसजी तो किसी को भी पैसा दे सकती है. एनकुकू मे बी पीपल आर सेइंग चेल्सी पीएसजी, हो सकता है वो पीएसजी चल जाए. अगर बेसिकली रियल मैड्रिड जाते हैं एम्बापे एंड साला गो टू बार्सा, देन प्रोबेबली बिकम्स अ पॉसिबिलिटी विद, लेकिन डेम्बेले अगर नहीं एक्सटेंड करते. बट आई हर्ड राफिनिया इज ऑलमोस्ट इमिनेंट भाई. राफिनिया एट बार्सा, हाउ डू यू सी दैट? चेल्सी भी लिंक थी बाय द वे. I don't know how I see that, to be honest, but I don't think he will flourish at Barca either. Yeah, you need more dependable players at Barca, to be honest. So Barca is still in the rebuilding phase. Putting the onus on a player like Rafinha at this time will also be a little more burdensome, in my opinion. थोड़ा burden ज़्यादा रहेगा उस पे. So I don't think so. I think they need more sturdy players. Rafinha is a good player, no doubt, from the flanks, inward forward. But I don't know. I don't see him at Barcelona, to be honest. चाहे जितना लिंक हो, मुझे नहीं लगता हो जाएगा Barcelona. ये देखिए यार, स्वॉप वार्नर एंड लुइस डियाज. लिवरपूल फैन है. स्वॉप वार्नर एंड लुइस डियाज, आप हमारा स्काउटिंग डिपार्टमेंट उठा लो, बता रहा हूं आपके फायदे में आएगा. हाँ मतलब गौरव, आई हियर यू यार भाई एकदम. सी, डिफेंस इज नॉट बीन अ प्रॉब्लम. इट्स नॉट लाइक मतलब नंबर वन प्रॉब्लम नहीं है. फिनिशिंग इज अ प्रॉब्लम, एंड फिनिशिंग के लिए मैं बोला हूँ, I would rather have someone who's a little bit more experienced, who's near the prime, rather than someone who's more having potential. Okay, that is the difference. Like a Ziyech kind of signing is something we were going in the right direction. I know वो इतना work नहीं किया, but that is the kind of signing in terms of their career, where they are, it will be better. Defense मैं बोल रहा था, because that will help me change the way we play. It's just that if we are having four at the back, it will give more freedom to the midfielders. Midfield, or we are not having any एक भी midfielder नहीं भाई. We don't have any player apart from maybe Kovacic जो create कर सके इतना, and we can only do that if we play four at the back. You know what I'm saying? And Conor Gallagher will be back. 4-3-3 will be ideal. Conor Gallagher, Mason Mount, Loftus-Cheek is an option off the bench. Then you have obviously Kante, keep him, he can play on either side, and then you have Kovacic. So ये पांच जन है जो number 8 है आपके, proper number 6/8 दोनों ही खेल सकते. तो I think for me that is the key, but it's the defense which is not there in terms of personnel उस formation के लिए. यार मैं देखा यार, हेयर स्टाइल का कमेंट मस्त था निखिल का, बढ़िया. बाय द वे दिशांत, हमने बात कर लिया है. For people joining late, we have spoken a lot about the consortium of Chelsea that is coming. Boehly is 90% confirmed, like Rahul has said to Rajesh. Absolutely, that is something which is true. But finally एक super chat आया भाई. Thank you भाई, thank you, means a lot. ये gesture ही means a lot. It's not about the amount, it's just a gesture. Because yes, of course, like I say, it's not just me, it's the entire team which works, right? And the entire team means you guys. आप लोग सब हो, and of course panel है. हमारी बॉडी करवा दी. Yeah, big shout out यार. अब साथ में क्वेश्चन भी दे देते तो और भी बढ़िया होता, लेकिन always यार big shout out यार आपको. वर्धन राठौड़, आप किसके फैन हो? आप ये बोलो. Whom do you support? Let me know. I think if I remember right, you might be a Madrid fan.
अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, सो प्लीज करेक्ट मी, अगर मैं बारसा फैन को तो मारेंगे यार पकड़ के। या आई थिंक राजेश मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो वी आर डूइंग दी लिवरपूल स्पर्स वाला वॉच अलोंग आज मिडनाइट को, so do join us everyone watching 12 o'clock sharp, we will be there hopefully with Chirag and Guruji अगर free हो तो। But Yeah. talking about that, Guruji is doing I think the Chelsea watch along, let me see if I can join him, and Chirag will be doing the City watch along, right? And I know that it's kind of a very odd hour for our friend Uday, लेकिन I know I'm pretty sure future watch along he will also join us. Chelsea can play 4-2-3-1 with Havertz on top. Well, rather 4-2-3-1 where Havertz will be the one behind the main striker. That would be ideal for him. I really feel that if he's been given the freedom, not a role like Oscar. We went that way, लेकिन उस समय De Bruyne we got rid. So I don't have great memories of that system for that reason alone. लेकिन हाँ, we did well for a certain period for sure. We won the league, yeah. Well, let's see यहाँ पर ओके वॉच अलोंग के लिए पिन कर दो यार, अभी यार एंड ही कर रहे स्ट्रीम, मुझे करना चाहिए था पहले, नेक्स्ट टाइम याद रखते हैं एब्सोल्युटली, लेकिन हम पब्लिश भी करेंगे एब्सोल्युटली यार। बाय टॉकिंग अबाउट पब्लिश, आई एम होपिंग एवरीवन हैज लाइक द स्ट्रीम। अभी भी यार बहुत ही बेसिकली शॉकिंग है दैट वी हैव नॉट रीच्ड 150 लाइक्स आल्सो। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? कम ऑन यार, मतलब कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। प्लीज लेट मी नो व्हाट रॉन्ग आर वी डूइंग दैट यू गाइस आर नॉट लाइकिंग द स्ट्रीम, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत लोग देख रहे हैं एंड दैट इज ग्रेट। That is brilliant to see that I'm getting the love. लेकिन if you're not liking the stream, it doesn't help the algorithm, you know. तो next stream में वापस फिर से from scratch होता है, and that is something that आप लोग ही मदद कर सकते हो। तो it's just a press of a button, it's just a press of a thumbs up. आप करो, एक like करो and subscribe करना मत भूलना अगर आप नए हो। Same thing to Loudmouth Football, right? He's a featured channel, आप देख ही रहे हो, आपको मजा आ रहा है इसलिए देख रहे हो, तो do check him out as well. यार end stream after 2 hours मैं थक गया हूँ honestly मैं बोलूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख ही रहो, वापस से दिखाता हूँ। आई एम रियली अनवेल पीपल, लेकिन फिर भी यार फुटबॉल की बातें करे बगैर तो मैं रहूंगा नहीं, सिंपली पुट। तो इसलिए आगे। और उदय यार आप बोलिए यार कितना, व्हाट इज द टाइम देयर, पीपल विल नो। मेरे यहाँ 3:52 AM हुए हैं सुबह के, तो 3:52 AM पीपल। उदय ओपी इन द चैट हो जाए यार, मतलब उस नाम के लिए आप लाउड माउथ फुटबॉल को कर लो भाई, सब लोग। 36 पीपल वाचिंग, ट्रस्ट मी यार, आप देख ही रहे हो, बंदे को पता है यार व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, एंड वी स्पोक अबाउट लिटरली एवरी लीग। बुंडेसलीगा यार कवर नहीं करेंगे आज, कम ऑन, वो हो गया है, वो चैप्टर क्लोज हो गया है इस बार। बुंडेसलीगा अभी हालैंड की बात कर ली ऑलरेडी, एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा लेट हो गया, नो प्रॉब्लम भाई तिलक, ऑलवेज यू कैन रीवॉच ऑब्वियसली होता है, और हम वॉच अलोंग भी करेंगे आज रात को, सो डू जॉइन अस फॉर द लिवरपूल स्पर्स गेम। 4-2 द नेक्स्ट मैच। जॉर्जिनियो तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। गंतव्य कोवाचिच का डबल पिवट ट्राई करना चाहिए, डबल पिवट डेफिनेटली रहेगा, दैट इज समथिंग दैट वी गोइंग। लेकिन भाई मतलब वी आर नॉट क्रिएटिंग इनफ, तो 4-2 थोड़ा बुल्स के साथ थोड़ा रिजिड नहीं हो जाएगा? 4-2-2-2. This will also change, Ankit. This changes. 4-2-2 doesn't stay as 4-2-2-2. ये प्लेयर्स दो की तरफ से प्रेस करेंगे, फिर वाइड हो जाते हैं, फिर इस साथ में 4-3-3 बन जाएंगे, 4-2-3-1 ही बन जाएगा। ये मतलब हाइब्रिड फॉर्मेशन है 4-2-2. बिल्कुल। चलो कोई नहीं, इट्स रियली लेट राहुल, आई हियर यू भाई, लेकिन इट्स रियली लेट फॉर उदय एंड वी हैव लिटरली डिस्कस्ड एवरीथिंग। और यहाँ पर एक और सुपर चैट आते हुए भाई, थैंक यू वर्धन। क्वेश्चन नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा, तो मतलब ये सपोर्ट, प्योर सपोर्ट है। थैंक यू, शाउट आउट आपके लिए सर्टेनली। और अगेन मतलब लाइक ऐसे ओनली आप अफोर्ड कर सकते हो, फ्री करा करो, लेकिन हाँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बिकॉज यस ऑल दिस विल गो टू द चैनल, एंड गेटिंग बैक द चैनल इटसेल्फ वाज स्पेशल आप लोग के कारण, एंड अदर चैनल आल्सो भाई, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस वो मत भूलना, एंड लाउड माउथ फुटबॉल। या हमने पूरा कवर कर दिया है। तिलक देखिए आप, सर्टेनली ब्रेकिंग न्यूज है 100% दैट, राइट? Ankit, why don't you answer this start question? Can current Arsenal team beat Barcelona? Let's see. Wow. Okay, वहां पर आते हैं। Can current Arsenal team beat Barcelona? Can they beat? Why not? I think they can. Why not, man? They can. वो दोनों ही young teams हैं, so it'll be a good match. It's actually a great question. That's why I started, you know. तो certainly एक मैचअप देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ये है ना, मिडफील्ड थोड़ा सा है प्रॉब्लम, सो आई कैन सी फ्रैंकी de Jong एंड बुस्केट्स काइंड ऑफ ओपनिंग अप आर्सेनल, तो वो वहां पर थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे, लेकिन अगर होता है तो देखते हैं। मतलब ये मैचअप अगेन नेक्स्ट सीजन बोथ द क्लब्स विल बी होपिंग यार, इट विल बी चैंपियंस लीग फुटबॉल। बारसा को तो ऑलमोस्ट है ही,
लेकिन who knows that they'll meet in Champions League, back 2006 final back again, that's something. Yeah. Maybe. Alonso and Aspi talk about Barca. Well, दोनों नहीं जाने वाले, ये तो पक्की बात है, ठीक है, एक ही जाएगा, अभी लग रहा है अलोंसो जाएगा from what it seems like, क्योंकि फाइनली आई थिंक अपने भाई साहब Fabrizio Romano, he has actually said that he actually wants to leave Chelsea finally. तो Spain is probably his preferred destination next Italy, तो Barca they need a left back. Alonso जाने जा रहा है. Alonso, yes, वो जाने वाला है, looks like, and mostly Barca लग रहा है from what it seems like from. I think he's intimidated by Ben Chilwell. Maybe he's like next season आ जाएगा, मुझे खेलने को मिलेगा नहीं. नहीं, लेकिन गारंटी नहीं है उधर. It's easy to say, मतलब how he comes back from injury. It's a long term injury. True. But again, I think it's about maybe Barca needing a left back or like opportunity here. But again, I'm kind of surprised. Yeah, 4 at the back system is not great. But like Sadiq bhai भी बहुत बार discuss किए. Barca don't really play 4 at the back a lot of times, within without the ball. So वो is okay. This we already discussed. Yeah. Who will take penalty next season if Jorginho leaves? Okay, so I would hope Lukaku comes to top form and he starts taking the penalties as well, पूरे confidence से. लेकिन नहीं तो Havertz भाई नहीं. Aspilicueta भी वैसे काफी अच्छा शॉट है पेनल्टी के लिए, ले लेता है वो भी तगड़ी. हाँ, Aspilicueta, लेकिन वही है, next season I doubt if he'll be a starter. But हाँ, Mount and Havertz are probably more realistic, I would say, क्योंकि दोनों ही लेते हैं penalties. और Mount I know recently miss किए थे penalty, but Havertz for Bayer Leverkusen, wow, what penalties, my top corner, that kind of penalties he always took. So I would say absolutely. Yes, absolutely यार करते हैं भाई. उदय राहुल चाह रहे यार और 7-8 मिनट रहे. I don't know if Uday. Let's stay on. We can take more questions, I think. Yeah, we can take the comments, क्योंकि यार ऐसे भी कंप्लेंट्स आ रहे थे. We don't take it. आर्सेनल की बात नहीं की हमने. आर्सेनल का कौन सा मैच है, हमने कर लिया प्रेडिक्शन? आर्सेनल लीड्स का प्रेडिक्शन नहीं किया, बस आर्सेनल लीड्स का किया, हमने किया था बेसिकली form wise. Basically Leeds are definitely improving, लेकिन वही है, they are just 2 points away from relegation, right? लेकिन Arsenal on the other hand, they are challenging Chelsea, and the fact that Arteta has अभी extend किए है, it will be a shot in the arm. I can certainly see जो young team है, they are backing Arteta. It is clear for everyone to see. So I can personally see कि Arsenal जीतेगी Leeds के साथ, and वही है, it will be a Chelsea thing. Come again last, I think penalty beat game of the season. It is basically next week शायद Leeds के साथ. Leeds, we are playing Leeds at Ellen Road, and we will drop points there. So it is a huge chance कि Arsenal can actually come to third and we come fourth. वो एक लग रहा है मुझे. हाँ, provided Liverpool beats Spurs, that is over to Uday and his team. लेकिन what do you think यार? What is your prediction? People in the chat. अगर मैं एक बार बोलूँ आपको, आप जो आपने कमेंट मारे, अगर टॉटनहम ने आज लिवरपूल को हरा दिया ना, ये समझ लो नॉर्थ लंदन डर्बी टॉटनहम ही जीतेगी, आर्सेनल हारेगी. मेरे हिसाब से ये है, बिकॉज स्पर्स विल गार्नर ऑन दैट मेंटालिटी एंड वो कॉन्फिडेंस लेकर आर्सेनल को हरा सकते हैं आराम से. इसमें मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे. या अरे यार, अगेन शाउट आउट यार वर्धन राठौड़. पता नहीं यार आपको क्वेश्चंस या तो आ नहीं रहा है सुपर चैट से, नहीं यार होगा कि मेरे प्रॉब्लम आती है सुपर चैट में, कि मेरे आती है, कभी आती है, राइट? आई नो, आई हैव डन इट. लेकिन हाँ, कोई नहीं यार, मतलब बिग शाउट आउट यार, एब्सोल्युटली हेल्प्स. लाइक आई से, एमरसन शुड बी बैक. एमरसन हैज एक्चुअली गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट अगर मुझसे पूछो तो मैं वहीं रहना चाहता हूँ. कहाँ? लियोन. तो ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड. तो ऐसे प्लेयर को आप क्यों लाना चाहोगे? आई वाज एन एमरसन फैन, मैं बोलूंगा. आई लाइक्ड एमरसन इवन फॉर इटली. आई थिंक ही वाज स्पिनेज़ोला के साथ कंपेयर किया जाता था. आई नो थोड़ा सा एक्यूलीज हील था, बट he's not your Spinazzola, but he has एक है, मतलब एक trickery element है, which something which Chelsea always wants in a wing back. Conservative fullback लगता था मुझे बड़ा, वो काफी conservative था. लेकिन यार Brazilian flair है उसके पास थोड़ा सा, मतलब मुझे तो भाई Spinazzola भाई crazy, क्या भागता था, मतलब insane, मजा आता. The way he overlapped and the way he put in those crosses, very very underrated. गंतव्यों को देखिए, कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर जावी का अलोंसो नहीं लाने देंगे. ये तो नारा लग गया पूरा. टॉप बिन फिनिश कौन करेगा? टॉप बिन फिनिश की न्यूज़ है सीजन, है ना? यार लेकिन मतलब मैं खुद ही बहुत सरप्राइज हूँ, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो यार, अबाउट अलोंसो. यार निखिल यार बहुत मेंडी विल टेक पेनल्टी यार, कम ऑन. मुझे पता है आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन नहीं. Having said that, talking about left back, Ferland Mendy भाई, मतलब he has been a very crucial kind of player for Madrid as well. Havertz for sure, yeah. मतलब
Again, Sadiq bhai, remember the kind of penalties of Bayer Leverkusen लेता था ना, cold blooded to the core. Exactly, Sadiq bhai puts it on the spot. ठीक है, तो I have seen him take a lot of penalties for Bayer Leverkusen. तो मैं बोलूंगा यार, definitely he is that guy, right? Will Reece James be in Chelsea forever like Trent? Never say ever. मैं तो बोलूंगा modern football है उदय, but मतलब again, मतलब we as a Chelsea fan, I have heard him a lot. I follow him a lot. He said that he can be in Chelsea without any money. That kind of a player, that kind of commitment है. लेकिन for you, Reece James, is he a player that can get to the very, 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 very top, and Chelsea at any cost should keep him, or what do you think? मुझे लग रहा है रीस जेम्स एम्बिशन ज्यादा है ट्रेंड से in terms of getting more exposure, because Chelsea aren't really that consistent अभी, but they're definitely raking in those trophies. Controversial. 3-4 साल में ट्रॉफी तो ले रहे हैं मेजर, बट स्टिल आई थिंक अगर उतना परफॉर्म नहीं कर पाई ना, तो रीस जेम्स विल लुक इनटू गोइंग समवेयर एल्स, बिकॉज ट्रेंट का हमेशा से एक विजन रहा है कि भाई मुझे ही वाज इंस्पायर्ड बाय स्टीवन जेरार्ड, ही वाज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट पीपल, सो उसको कैप्टन बनना था हमेशा क्लब का, तो आई थिंक ट्रेंट का एक तरह से लाइफर, इफ यू कॉल हिम अ लाइफर और अ लॉयलिस्ट, ही इज लिटिल अबव रीस जेम्स ओवर देयर, बट इट्स नॉट रॉन्ग टू बी एम्बिशियस, टू बी ऑनेस्ट. Yeah, मतलब I know it's controversial. Like I said, never say ever, because मुझे लग रहा है फ्यूचर में जाएगा. Honestly, मतलब Chelsea unfortunately has become that club. What we were not in the late 2000s, हम वो हो गए वापस से what we were in the early 2000s. But it's a phase, यार. It's a phase. मतलब Chelsea, the club bigger than the player. But अभी तो Reece James will stay. Next couple of years, I'll be really shocked अगर वो निकले. Who do you think City should sign as the CDM with Fernandinho leaving? There are news Pogba is looking to join City. Again, those are two CDM different तो things. कहीं बनेगा. पॉग्बा बेचारा CDM खेल नहीं पाता, तो कहाँ बनाओगे CDM? मुझे नहीं लगता पॉग्बा जाएगा सिटी, टू बी ऑनेस्ट. This is a very blatant. He will not be CDM. He will probably I don't know. मतलब you can say maybe Gundogan has not got enough minutes this season. भागी वो एनर्जी नहीं है 90 मिनट वाली, कहाँ खिलाओगे उसको? लेफ्ट कहाँ खिलाओगे? लेफ्ट मिड में भी कहाँ खिलाओगे? CDM में problem है ना, Rodri has been too good for them. तो problem यही है कि will they get a world class CDM who's ready to play second fiddle? Fernandinho, maybe वो age they should target something like maybe just left field choice है, Arturo Vidal out of nowhere. Fernandinho element है उसमें थोड़ा. हाँ जी, मेरे हिसाब से देखो, आप बात करोगे तो अभी सिटी की टीम सेट है, कुछ ऐड करेंगे सिटी पेप की जो एस में गूदा होता है वो होगा सिर्फ एक स्ट्राइकर के लिए, ठीक है, तो और मुझे लगता नहीं वो कोई एडिशन लेकर आएगा. डिफेंस ले आएगा, शायद डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता रहता है वो, 1 बिलियन लगा दिया उसने, और या तो अटैक में करेगा और कहीं नहीं करेगा. अरे भाई करीबन 2 घंटे हो गए यार, कम ऑन. व्हाई आर द लाइट्स नॉट गोइंग अप आज? वी हैव लाइक करो यार, लाइक करो. 2 घंटे से हम स्ट्रीम कर रहे हैं यार. वी हैव बीन डिस्कसिंग सो मच फुटबॉल. यार 4 बजे सुबह है, सुबह के 4 बजे है उदय के, 4:03 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो 4 बजे सुबह यहाँ पर आप देख ही रहे हो, तबीयत खराब है, और राहुल है, बहुत सारे मॉड्स है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, खुद अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए यार स्ट्रीम. ऐसा क्या कंजूसी यार, कम ऑन. मेरे टारगेट्स इतने ज्यादा नहीं रहते, मेरे टारगेट्स वही 200 लाइक्स तक ही रहते हैं, राइट? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो बाहर खिड़की है, रात हो रहा है. हाँ बिल्कुल 4 बजे वहाँ. एंड रीस जेम्स शुड प्ले राइट विंग बैक, ही इज गुड एट राइट सेंटर बैक, बट अटैक आई एग्री विद गौरव 100%. उसको एक्चुअली टूकल ना थोड़ा सा दो माइंड में, बिकॉज वो राइट सेंटर बैक में इन मेजर मैचेस बहुत ही important as an element थे. He is like confused whether he should be a future right wing back or whether he should get इतना सारा freedom. मेरे ख्याल से just give him the freedom, like what Trent gets. Give him the freedom, man. Just give him the freedom. Ankit, I think he would love to play at the wing back position only. RCB तो fill कर रहा है क्योंकि चेल्सी के बाद अभी options कम थी, तो I think तभी fill कर रहा है वो. क्रिस्टियनसन को खिला नहीं रहे थे आप, तो obviously I think. अरे थैंक यू और वर्धन राठौड़, कितना ही थैंक यू कम है, absolutely helps. Team should look at bringing in Leon ka right back instead. Malo Gusto, yes, just 18 and already one of the most important players. Yeah, I wouldn't deny that. लेकिन again Chelsea के लिए तो मैं बोलूँगा यार, we rather, हमारा लोन आर्मी है. We are having a lot of players. We have Dujon Sterling, who's very good, who did very good pre-season में. We have Martin on the other side. हमारे पास लेवी कॉलविल है सेंटर बैक, तो वो यंगस्टर्स anyway आने वाले. That's what I think. New owners इतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. Absolutely, right away. तो मुझे तो लग रहा है चेल्सी के लिए वी रादर गो फॉर एक्सपीरियंस. लेकिन हाँ, मे बी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड हु एनीवे आर लुकिंग फॉर अ फुल बैक,
maybe, who knows, right? I mean, it might be a good gamble, Sadiq bhai. Okay, ये क्या है? How will you do watch along on 22nd May? एक तरफ सिटी वर्सेस एस्टन विला, एक तरफ लिवरपूल वर्सेस, दोनों लास्ट मैच ऑफ द सीजन. अरे भाई हॉटस्टार लगा लेना एक टाइम पे टीवी पे. अरे बाय द वे, लास्ट मैच ऑफ द सीजन हमेशा ऐसे ही रहता है. ऑल द मैचेस आर सब चलते हैं टुगेदर. ठीक है, हम करते हैं. क्लब वर्ल्ड कप फाइनल पेनल्टी, कांट फॉरगेट दैट. यस, एब्सोल्युटली. मैं एक जोक मारूं, यहाँ पे एक बोल रहे हो इन रियल मैड्रिड वी से हाला मैड्रिड, व्हाट अबाउट चेल्सी? चेल्सी बोलती है मो मॉरिनो क्या आती है तो मो करती है. Yeah, Rajesh is like, contrary to what I said, now I'm in favor of bringing Alonso. I think he's the only decent left back in the market. Okay, interesting. Again, lot of comments. Again, thank you यार, मतलब 2 घंटे से आगे हो गए. But like the stream, guys. 15 more for the target. Let's all like the stream. Come on, let's not go without liking the stream. It will be really unfair. And do join us for the watch along. Do not forget, watch alongs होने वाले हैं. Especially on Almighty Blues FC, we are doing a watch along आज रात को 12 बजे. This is going to be Spurs away at Anfield. बहुत ही अच्छा होने वाला है. Title decider potentially. And of course, Guruji will be doing the Chelsea watch along. Shirag will be doing the ManCity watch along. और हम क्रिकेट का भी करेंगे on Almighty Sports Plus. Big up to Loudmouth Football. Do check out his channel as well. Yes, Darren, last में आते हुए, thank you. I just announced the watch along as well for Tata United. But over to my friend Uday. Uday, thanks यार. मतलब any last predictions over the weekend? नहीं, आई जस्ट थिंक कि ये लीड्स मेरे हिसाब से रेलेगेट हो सकती है. अगर ये मैच हार गई लीड्स तो आई थिंक मोस्टली दे माइट गेट रेलेगेटेड विद नॉर्विच एंड वॉटफोर्ड आर एनीवेज गोइंग डाउन. तो आई होप बर्नली सर्वाइव द रेलेगेशन रेस. बाकी क्योंकि मैं बर्नली से काफी इंप्रेस हूं, उनको काफी फ्रीडम मिल रहा है आफ्टर शॉन डाइश. उनको काफी फ्रीडम मिल रही है खेलने में. तो काफी अच्छा खेल रहे हैं वो. प्लस आई थिंक चेल्सी लिवरपूल जीत जाए फिक्चर्स, और आर्सेनल का पता नहीं, आर्सेनल भी जीत जाए होप. तो आर्सेनल लिवरपूल और चेल्सी जीत जाए, सिटी हारे और टॉटनहम हारे. Wishful thinking, but brilliant, man, brilliant stuff. And again, people, yeah, do get in your comments, yeah, good, get in your comments for the predictions. Absolutely, यार, काफी मैचेस डिस्कस किए. Real Madrid का भी big match है. Let's see, we'll do another live stream over the weekend as well, apart from the watch along भी. भैया प्लीज कह दो कि बर्नार्डो को बारसा रूमर्स आर फॉल्स. क्यों जाएगा भाई वो? बर्नार्डो सिल्वा क्यों जाएगा? मतलब बारसा चैंपियंस लीग नहीं जीतने वाली नेक्स्ट सीजन. बहुत ही मतलब सरप्राइज रहेगा. They are definitely improving, but I doubt they'll win the Champions League. So, when City are winning cups for fun and under Pep, so there was a period last season, आप बोल सकते हो कि वो इतना मैचेस स्टार्ट नहीं कर रहा, but I think he's one of the main players for City this season. So नहीं जाएगा यार मेरे ख्याल से. It's good to see a देसी क्रिकेटर like you. मार्क गोल्डब्रिज देखते देखते कान से खून निकल गया है. Well, thank you, bhai. Thank you. और क्या ही तो बोलूं. Absolutely, amigos, absolutely everyone. Yes, we did talk about that, and we'll come to this for next week. But again, people, like I always say, like the stream, do subscribe अगर आप भूल गए, और not just to this channel but to Almighty Sports Plus. वहाँ पर बहुत content आना शुरू हो गया है और भी आएगा. And we are back for watch alongs, both the sports. लेकिन big up to Loudmouth Football. Till next time, take care, and everyone, yes, keep the blue flag flying high, क्योंकि yes, Chelsea का मैच है आज, don't forget that.